आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के रोमांच के साथ एक बार फिर मैं हूं वीरेंद्र कौशिक और मेरे साथ है साथी कमेंटेटर रुपिंदर। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक। शॉटपुट के ये मुकाबले मंजीत अहलावत हरियाणा के, सुमित हरियाणा के, बसप्पा कर्नाटक के, भूपेंद्र सिंह राजस्थान के, हरिओम यादव राजस्थान के, गोकुल कानन तमिलनाडु के, मोनिया सामे तमिलनाडु की और आदित्य कुमार उत्तर प्रदेश के। जी हाँ, ये देखिए शॉटपट F53 का यह मुकाबला है और यह खूबसूरत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। रुपिंदर, Men's shot put F53 event resuming proceedings after lunch. We look forward to some lovely surprises and pleasant surprises like we got in the morning in the 100 meters T37 when a young boy Rakesh from Gujarat upset the Asian Games medalist Shreyans Trivedi. We have a lineup of 8 athletes in the shot put F53 final. And F53 would mean a good performance because the level of reduction our expert will explain to you. Thank you. So we are resuming after lunch. This is the second session. F53, another very critical category. Field athletes, movement affected to an extreme degree. Trunk and legs, affecting the grip as well. And which is why they are made to sit, generate enough inertia to throw any object using their chest, the upper back and shoulders strength. जी हाँ, 3 किलोग्राम का ये भार होता है और इसे आपको रिलीज करना होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना होता है। और गोकुल कानन, जी हाँ, तमिलनाडु के ये खिलाड़ी, बिब नंबर 531 और खेलने का जो तरीका है वो कुछ जैसा हम जैवलिन थ्रो में देख चुके हैं। सेम वही पॉल की जो सपोर्ट इसका रहता है, एक हाथ से आप इसको ले लेते हैं और दूसरे से आप थ्रो करते हैं। पूरी तैयारी। Basically in this throw, as we saw, typically in the F50s category, we see that the players are typically seated, they're strapped onto a chair. The chair becomes almost part of their body, and as a mandate they are supposed to hold a pole to balance them out to risk any injury to self. And like I mentioned earlier, the grip is also somewhat expected. It is somewhat compromised in this classification, but eventually using the power of the shoulder, the back, the chest, the athletes are supposed to throw any object. In this particular case, it is going to be shot put. Shot put, as we know, it's a 3 kg metal ball, and the metal ball is supposed to be thrown. Most of you must have seen Deepa Malik, one of the most famous athletes in this category, representing India at an international level. And a couple of other players are there. We saw Pradeep Kumar, silver medalist in Para Games. And now we are seeing players in the same classification. Let's see. जी हाँ, 3 थ्रो आपको मिलेंगे फर्स्ट राउंड में और उसके बाद सेकंड राउंड होगा। 6 टोटल हो जाएंगे और उसी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। और इससे पहले जैवलिन थ्रो में भी हमने देखा कि 6 अटेम्प्ट मिले थे आपको, और ओलंपिक में भी जो रहते हैं वो 6 अटेम्प्ट ही जैवलिन थ्रो में रहते हैं। और ये देखिए, ये है वो मेटल की बॉल जिसे हम कहते हैं, इसे शॉट पट कहा जाता है। ये 3 किलोग्राम भार है यहाँ पर इसका, और बड़ा
एफर्ट लगाया है, देखना होगा 5 मीटर की जो दूरी है उसको भी ये अभी पास नहीं कर पाई हैं, लेकिन अभी दूसरे अटेम्प्ट में देखना दिलचस्प होगा। जी, ये जो स्टार्टिंग में पहले समय दिया जाता है एथलीट को कि आप, ये अभी प्रैक्टिस की जा रही है, इशारा नहीं हुआ, ये देखिए। जी हाँ, जो वार्मिंग अप का जो एरिया होता है, जी हाँ, ये देखिए कोशिश। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्कोरिंग ली जा रही है। ये कुछ हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, ये प्रैक्टिस नहीं है, ये बिल्कुल एकदम करंट मुकाबला है। जी हाँ, ये देखिए पहला जो अटेम्प्ट है वो सक्सेस नहीं हो पाया। अभी दो जो जी हाँ, वो Very strict rules. He cannot lift his hip above that, and that's why we see the man with the red and white flags just next to him, studying him. And here comes the first legal throw. It looks like we'll get a white flag for this one. Yes, Rupinder, that's a correct observation. If at all any other body part, especially in this category, is seen as moving or affecting the performance, that should, at an international level, should call for a reclassification, which is a big callback. I've seen players getting disqualified from events as well. So you legally can't use any other body part except your shoulder, your chest, and other muscles which are allowed in this classification. So Gukola Kannan getting 2 legal throws in out of his 3, and the third one seems to have crossed the 5-meter barrier. No, it's 4.61. और ये पहले राउंड का तीसरा प्रयास देखना होगा, क्या कमाल करके दिखाते हैं गोकुला कानन, तमिलनाडु के ये खिलाड़ी काफी एक्सपीरियंस्ड, और लेकिन इस बार भी अपना जो प्रदर्शन है, ये थ्रो वैलिड है, लेकिन जो दूरी है वो लगभग 5 मीटर के आसपास रहने का अनुमान। अभी भी सोच रहे हैं क्या मैंने किया है, वो देखना, ऑफिशियल रिजल्ट अभी देखते हैं, पता चलेगा। जी, ये अब तीसरे प्रयास के लिए शायद दोबारा ट्राई। टोटल, जी हाँ, ये टोटल ही 6 यहां कर दिया गया है, जैसे जेवलिन थ्रो में हमने देखा था, कंटिन्यूअस आपको दे दिए गए हैं। ये चौथा प्रयास, पांचवा, बिल्कुल वैलिड थ्रो है, जैसे ही हम देखते हैं कैनोइंग में फ्लैग अप मींस फेयर रेस, और ये फेयर थ्रो। लेकिन जो लग रहा है बॉडी लैंग्वेज से, फेस एक्सप्रेशन से, ये रिप्ले में देखिए क्लियर, थ्रो वैलिड है, लेकिन खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से निश्चित तौर पर उतने संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं जितना उन्हें होना चाहिए। दिन होता है दरअसल रूपिंद्र किसी किसी खिलाड़ी का, कि आज शायद जैसे क्रिकेट में हम देखते हैं फॉर्म, तो आज लग रहा है गोकुल कानन अपनी फॉर्म को मिस कर गए हैं। छठे प्रयास में देखना होगा, अभी तक का बेस्ट 5.42 मीटर, और उससे पहले दूसरे ही प्रयास में तो 4.61 मीटर का प्रयास इनका सफल रहा था। जी, इस बार देखना होगा, ये फेयर थ्रो है, और अब स्कोर पे नजर डालेंगे, यहां से डिसाइड होगा। फाइनल ये मुकाबला है शॉर्ट पट 48 मेंस F53 कैटेगरी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरती से, लेकिन निश्चित तौर पर जो खुशी होती है अपनी परफॉर्मेंस की, वो तो कम से कम गोकुल कानन के चेहरे पर अभी नजर नहीं आ रही है। और इसी के साथ इनका ये स्कोर कंप्लीट, छठे प्रयास में इन्होंने किया 5:30.35, और
निश्चित तौर पर ये 5.42 जो चौथे प्रयास में इन्होंने किया था, ये इनका बेस्ट स्कोर। Generally, the throwers find the first throw as maybe a warm up and then generate their best throws in the second, third, and fourth. And Gokula got his best in the fourth, and then when the endurance of the muscles go down, the fifth and sixth, they find it very difficult. I think most viewers will understand when they see Neeraj Chopra throwing. He gets his best throws in the first three. After that, it becomes really difficult. जी हाँ, बिल्कुल रुपिंदर, आपने अच्छा याद दिलाया। ओलंपिक्स में जब टोक्यो में नीरज चोपड़ा गए थे अपने थ्रो के लिए, तो जो पहला इवेंट था वो इनफ था निश्चिंत होकर बैठने के लिए, लेकिन जो सेकंड था वो उसमें सील कर दिया था विक्ट्री को उन्होंने। बिल्कुल सही आपने ये कहा। खूबसूरत नज़ारा, दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ट्रैक एंड फील्ड। फील्ड के जो मुकाबले हैं वो स्टेडियम से बाहर। ये स्कोर फाइनल, मेंस शॉटपुट सुमित 6.83, गोकुला कानन 5.42, दूसरा स्थान हासिल इन्होंने किया है यहां पर। और इसे दीपक, शॉटपुट की अगर बात करें रुपिंदर, तो इंडिया के काफ़ी एक पॉपुलर खिलाड़ी हैं, आपको शायद पता भी होगा, सोमन राणा। आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आर्मी पैरालंपिक नोड, अंडर द एजिस ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड इट ऑपरेट्स। और वो और बहुत ही एनकरेजिंग चीज़ ये है कि इंडियन आर्मी एक्चुअली सपोर्ट्स its personnel who have been injured or not able to actively participate in the army related activities. And Soman Rana, again a very very known name, who lost his leg in a mine blast in 2006, and he participated in the Paralympics as well. But I'm very impressed how the majestic Indian Army takes care of the aspirations of its personnel. In fact, the evolution of the Paralympics started in Great Britain from the fact that they wanted to give something for the injured personnel in the army that had fought in the world wars, and that was the beginnings of the evolution into what became the Paralympic Committee of India. To begin with, it was for the war veterans. Now it has become all inclusive, and we've seen a great development world over in the Paralympic movement. जी हाँ, ये आदित्य कुमार उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं और ये इनका पहला थ्रो फेयर इसको डिक्लेयर किया, फ्लैग अप, और इसकी दूरी निश्चित तौर पर 5 मीटर से कहीं ज़्यादा। अच्छी शुरुआत ये कही जाएगी। आदित्य कुमार, अभी तक 2 खिलाड़ी अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ कर चुके हैं, सुमित हरियाणा के और गोकुला कानन तमिलनाडु के, और अभी तक के स्कोर में सुमित लीड कर रहे हैं और दूसरे स्थान पर हैं गोकुल कानन। अब ये तीसरा खिलाड़ी क्या इसमें कोई फेरबदल करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। Up, and you watch this throw. It looks as if it will measure close to what Sumit has thrown. His first attempt was 6.10, and this was his second, which looked very close to the 7-meter line. Here we go again. जी हाँ, वो लगभग जो 7 मीटर का डिस्टेंस है उसके पास पहुंचने की भरसक कोशिश थी ये, लेकिन सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन बिल्कुल पास, लगभग देखिए ऐसा लगा था कि शायद छू लेंगे, लेकिन मौके अभी बचे हुए हैं। निश्चित तौर पर अगर दमखम खिलाड़ी के पास होता है तो 6 मौकों में से 1 तो वो अपने नाम करने में सफल रहता है, और यहाँ कोशिश यही रहने वाली है आदित्य कुमार की अद्वितीय प्रदर्शन करें। जानते हैं बहुत बड़ा यह मंच है, पैरा गेम्स पहली बार, ये देखिए बहुत बढ़िया, जैसा कि हमने बताया था कि बहुत नज़दीक
6.56 मीटर। बहुत बढ़िया अभी तक का ये प्रदर्शन। आदित्य कुमार उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी। Current leader is Sumit with 6.83, and this looks like a throw. Watch carefully, landing just short of that line. So he's coming close to Sumit, and this is going to be an interesting battle for the gold medal here in the F53 final of shot put. जी हाँ, यही इन खेलों की खूबसूरती, यही आकर्षण कि जो रिकॉर्ड सेट किया है पहले वाले खिलाड़ी ने उसको आप ब्रेक करें और नाम लिख दें अपना, और वही कोशिश क्या। लेकिन इस बार पहले जो प्रयास था थ्रो फेयर है, लेकिन 7 मीटर से बहुत पीछे। ये देखिए रिप्ले में खूबसूरती से अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। जानते हैं कि एक बार ये 7 मीटर की लाइन को छू लें तो निश्चित तौर पर लीड करेंगे चार्ट को। समय ले रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, एम कर रहे हैं 7 मीटर मंजिल, लेकिन इस बार भी पीछे। 3 किलो का लोहे का गोला फेंकना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। यू कैन सी the droplets of sweat on his forehead. He's probably panting, very disappointed, elated at the same time. But I think for him the attempts are over. And let's see the final score. But it's not an easy task. Even for people who don't have any disability, even for them, throwing a 3 kg metal ball across a distance is not an easy task. बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, लेकिन जो इजी काम करते हैं उनको इतिहास याद नहीं करता है, वो याद नहीं रखे जाते हैं। आप मुश्किल काम को अंजाम देते हैं तो ही कुछ बड़ा कर पाते हैं, और उसी कोशिश में यहाँ पर आदित्य कुमार उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी, चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि जो चार्ट की स्थिति है वो निश्चित तौर पर दूसरा स्थान तो इन्होंने 100% हासिल किया होगा। अपने छठे पहले प्रयास में, चौथे प्रयास में 6.90 अपना सुमित से लीड ले लिए इन्होंने। पहले स्थान पर अब पहुंच गए हैं आदित्य कुमार। जी हां, गोकुल कानन अब पहुंच गए हैं तीसरे स्थान पर, सुमित दूसरे पर, और आदित्य कुमार चैंपियन की तरह उभर कर आया है उत्तर प्रदेश का यह खिलाड़ी 6.90 मीटर की दूरी के साथ। Definitely it takes a lot more time because of the management of the shot putter to be placed on his bench, and then he starts his 6 throws. But it is interesting. We just saw Sumit lead with 6.83, and up comes a challenge from Aditya of Odisha, who's reached 6.90, and now we are hoping the 7-meter barrier will soon be crossed. I think it's all about the barrier, because even Neeraj Chopra has been, trying to break the 100-meter barrier for a 90-meter barrier, in fact, for a long time. But 100-meter has been a reality, right, in the past, in javelin throw, right, at least, in the able-bodied. But, it's the mental, I think that mental line that the athletes, they want to break. And in this case, it's the 7-meter line. Aditya is just close to 6.90. So I hope Aditya has now raised the dreams of the putters to follow. Actually, it matters a lot, because I remember in one Olympics in 1968 at Mexico, the first jump, there was a jumper by the name of Ralph Boston, and his first jump went nearly 3 feet above the world record, and he never took any more jumps. He just went home, relaxed in his hotel, and waited for his ceremony. And he, in fact, became the first person in the history to break the 27 feet barrier in the long jump. And it took 31 long years for it to be eradicated. In 1991, in that great tussle at the Tokyo World Athletics between Carl Lewis and Mike Powell. And Mike Powell now holds that record, set in 1991.
Already 32 years have passed, and long jumping is still not seeing legends like him and Carl Lewis. That's right. Do you think who's the legend, Rupinder, in the Indian landscape? If we talk about, let's say, long jump for that matter. Well, the modern day legends are Murli Sri Shankar, but what I remember from my time, 1974, T.C. Yohanan winning the Asian Games gold medal with a leap of 8.07 with the limited opportunities and facilities was a much greater jump than that of Murli Sri Shankar. और रुपिंदर मैं जिक्र करना चाहूँगा अंजू बॉबी जॉर्ज का लॉन्ग जंप के लिए ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और कौन भूलेगा उस खिलाड़ी के शानदार प्रदर्शन को. Well, those are the legends. Anju Bobby George, P.T. Usha, Milkha Singh, Sriram Singh, Gurbachan Singh Randhawa. And it is on these legends' base that finally we got the gold medal. And here's the ceremony for खेल में ही मस्ती है खेल तंदुरुस्ती है. Finally, the winner और अब of समय है the उन gold खिलाड़ियों medal को मेडल at दिए Khelo जाने India का, Para जिन्होंने Games यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया 2023 है. representing Orissa. मेडल जीते Please हैं. put your hand together for Pankaj Bhuye with a performance of 12.41 seconds. I would now again request Mahadev sir to kindly present the medal to the winner. चांद छूना चाहते हैं हम उड़ चलो पंख देंगे हम खेल डर मिटाएगा जीतना सिखाएगा खेल से उड़ान देंगे हम. Thank you so much. Now I would request the Yeah, dignitaries ये and the medals winners together in याद front of the रखे podium जाएंगे. for the official photograph. जब किसी खिलाड़ी के करियर की शोभा बनता है तो उस मेडल का भी भाग्य उदय हो जाता है. वो भी सजा लिया जाता है हमेशा के लिए घर के शोकेस में. गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज. Pankaj Bhuye, winner in the men's T1300 meters. Thank you so much. तंदुरुस्ती है खेल से आबाद होंगे हम आगे बढ़ना चाहते हैं हम मत डरो साथ देंगे हम. Women's discus throw F11, 37 and 38 together. F11 is the extreme visually impaired, and right on the top is a legend according to me, Dr. Nidhi Mishra. F11 virtually very little visibility. She topped the university in BA, MA. She topped JNU University in her doctorate and is currently a lecturer in Shahid Bhagat Singh College. And she is also a bronze medalist at the Asian Games. Dr. Nidhi Mishra. People like this will really inspire a new generation of athletes. जी हाँ, दिल्ली की शोभा कही जाती है निधि मिश्रा. गर्व है इस खिलाड़ी पर दिल्ली को. कोमल त्यागी मध्य प्रदेश की. Even though they have extreme
visual impairment, the escort brings them to the discus throw arena, and they're supposed to have practiced so that they can get the best out of themselves. Here the escort comes to take her out. She comes to drop her in and then take her out. हरियाणा की लक्ष्मी 238 F38 कैटेगरी, और ये निश्चित तौर पर फेयर थ्रो होना चाहिए। बहुत बढ़िया थ्रो ये कहा जाएगा। अपनी पूरी शक्ति को झोंक दिया है। Mukta. Actually, this is a combined event of F11, which is extreme visual impairment, and then reduction mobility in the lower section, which is F37 and F38. जी हाँ बिल्कुल। So F11, F37 and F38, from a body parts perspective, they may be different because F11 is more towards visual impairment, but F37 and 38, the balance is affected. So the power in the body is unevenly distributed, and discus throwers, they use their non-affected arms. But if you notice, one leg and one hand on the same side of the body, that is extremely affected. And now we have F11, Bib 161. You can see that that's Dr. Nidhi Mishra, which Rupinder talked about. Very, very talented athlete. And she is now, so she comes from F11 category and she competes with F37 and 38. And look at the coordination, look at the sense of judgment, that where you need to throw. That requires a lot of practice. And that's what, this game is all about, right, Rupinder? Absolutely. All the practice, the awareness of where you are in the ring. You should not be crossing the ring. See the escort coming to take her back. She does it all on her own. And this is what builds their confidence. The escort brings her in, places her there, and then the throw is done by her on her own. जी हाँ, 2.50 मीटर का ये रिंग रहता है, डायमीटर इसका होता है। और जो पुरुषों की एक बात करें तो उसमें 2 kg की डिस्कस होती है और ये 1 kg वीमेंस के लिए वेट होता है। और अब ये देखिए इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। और अब ये शिवगामी तमिलनाडु की खिलाड़ी, बहुत बढ़िया देखना होगा। प्रयास अच्छा था लेकिन दूरी कितनी अच्छी थी वो देखना दिलचस्प। 3 कैटेगरीज एक साथ यहाँ compete कर रही हैं, F11, F37 एंड F38। वीमेंस डिस्कस थ्रो का ये फाइनल मुकाबला, गोल्ड मेडल यहाँ दांव पर लगा हुआ है। और अब वो समय जो पहले खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं उन्हें मेडल अवार्ड किए जाएंगे। मंच तैयार है। Heat 1, 2, 3 with the final का हुआ। ये देखो
थे सर वो? 1500 मीटर का है, वो 100 मीटर का बता रहा हूँ हीट। 1500 में T11 तो अंकुर धामा जीता है। सर ये हाँ, उनको धावा जीता, बात तो सही है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये अंकुर धामा तो नहीं है। ये मुझे लगता है शरद वाला है, T13। भूषण वाला होगा ये। T13 फर्स्ट कौन आएगा? भावेश सर ये फर्स्ट ये T13 1500 में भावेश आया था सर। भावेश भट्ट, यही है ना? भावेश है ये? हाँ, बीच वाला। हाँ। ये हाँ। ठीक है, एकदम great। T13 भावेश आया था सर। 4:20 फिर शरद 4:24 और उसके बाद सौरभ 4:41। T13 1500 meter gold medalist Bhavesh Bhatt beating the silver medalist from the Asian Games into second position Sharad MS, who got the silver. Bhavesh Bhatt, another one of the surprise winners, and this is what the Khelo India Para Games is going to do, discover new talent. And that's Saurabh with the bronze medal. 4 minutes and 41 seconds. So Bhavesh, Sharat and Saurabh. Men's 1500 meter T13. Now coming back to our main event. Women's discus throw. और एक बार फिर रोमांच है डिस्कस थ्रो का, विमेंस डिस्कस थ्रो का यह मुकाबला। स्कोर की बात करें तो निधि मिश्रा जैसा कि नाम वैसा ही काम 25.29 मीटर, लक्ष्मी 19.79 मीटर, कोमल त्यागी 17.29 मीटर, शिवगामी 14.27 मीटर और कुडुमुला लोकेश्वरी 13.66 मीटर और मुक्ता 11.29 मीटर। दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। Rupinder, if you look at the difference in the performance of Nidhi and the second one, Lakshmi, what's your view? That's a significant difference. And if you see, that's like a 2-meter difference between the second and the third placement. And that's a huge 6 meters of difference, which is a lot by any standard. Do you think that's because of the category, or it could be because Nidhi is so good? No, it's a combination of both. Exactly as you explained in the category, there's a visual impairment in the case of Dr. Nidhi Mishra. She has the power, whereas the others are from F37 and 38, where you said there was a reduction of power both in the lower limb and in the upper limb, and that is also contributing, I guess, to the results. So Nidhi Mishra from Delhi, she has been a top athlete in her category for long. I mean, she participates in both track and the field, both in F11 categories, obviously, because she has that visual impairment. But very polished athlete. And now we are looking at जी हाँ, कुडुमुला लोकेश्वरी तेलंगाना की ये खिलाड़ी। कुडुमुला। right. So that's that's where you see the difference. F37 and F38 and F11. Now F11, you can see that the guide is going to escort the player, and the player is going to be based on her judgment. She's going to put a throw and see that's. So you see the guide very nicely explaining that where is the direction, where you should throw, and that takes a lot of practice and a lot of I think mechanical sense in your body. While F37 and 38 they can see, but they can't use the complete body power, and that's where Rupinder my point was. जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत थ्रो देखने को मिला और बहुत ही एक तरीके से समझना होता है पहले कि डायरेक्शन क्या रहेगी। चुनौती जो है बहुत बड़ी, ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से थ्रो किया है।
जी हाँ, शिवगामी है ये। शिवगामी तमिलनाडु की खिलाड़ी। और अब ये आपके सामने कोमल त्यागी, दो मध्य प्रदेश की, तैयार अपने प्रयास के लिए। And you see, you should, as a viewer of the sport, you should appreciate the techniques that the players are using. So she is placing her left foot in such a strategic direction that she does not miss the pass. And you can see that she's not even going to do that complete double twist, which is traditionally what is done in discus throw. And she's, there you go. It's just, one spin. Exactly like you said, you should appreciate the fact that the throw is coming right within the sector in which they are permitted, they are able to throw. I've often tried it, blindfolding myself. I couldn't run even 2 steps without feeling fear. And here are these women throwing an implement fearlessly, and this is what all the confidence that sport gives to these para athletes. And I think, Rupinder, that's where the mascot Ujjwala is very relevant. Small yet powerful and very agile. Absolutely. लक्ष्मी हरियाणा की, हरियाणा का दमखम दिखाने के लिए तैयार। देखना होगा दूरी कितनी तय की। दिलचस्प रहा है ये मुकाबला अभी तक। जितने भी खिलाड़ी हैं ये कंबाइन कैटेगरी F11, F37 और F38 के ये विमेंस यहाँ मेडल की तलाश में अपने अपने प्रयास करते हुए। डिस्कस थ्रो का ये मुकाबला 1 kg वेट और 2.50 डायमीटर का ये रिंग। जी हाँ, यही एक रिलेशन है इनके बीच में कि यहाँ से आप जितने डिस्टेंस को तय कर पाते हैं वहीं से डिसाइड होता है कि मेडल का रंग क्या होगा और मेडल होगा भी या नहीं। गाइड्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डायरेक्शन तय करने में खिलाड़ी को बहुत, ये देखिए पहले प्रयास विफल रहा था लेकिन दूसरे प्रयास में सफल रही थी। तीसरा प्रयास बहुत बेहतर था। ये बहुत बढ़िया तरीके से थ्रो किया है। 35 3 पॉइंट ये फेयर थ्रो है। रिप्ले में देखिए हाइट अच्छी थी तो दूरी भी निश्चित तौर पर अच्छी होनी चाहिए। संतुष्ट नजर आ रही हैं अपने इस प्रदर्शन से। और अब मुक्ता, हरियाणा की दूसरी खिलाड़ी इस मुकाबले में, अपने 5वें प्रयास में क्या करेंगी देखना दिलचस्प होगा। अभी तक 4 राउंड हो चुके हैं। टोटल 6 राउंड यहां पर मिलेंगे, 6 अटेम्प्ट मिलेंगे इसमें। और वहीं से डिसाइड होगा कि आप सेम एज शॉटपट, सेम एज जेवलिन थ्रो, 6 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे और जो बेहतर उसी के आधार पर मेडल का रंग भी डिसाइड होगा। So F11, F37 and F38, we have 3 players coming in from the F11 category. That's Nidhi, Komal and Shivgami, and we have 2 players, Mukta and Lokeshwari, F37 and Lakshmi, F38. But we have explained why it makes sense to combine these 3 categories and to create an equal opportunity for the person who is going to win. जी हाँ दीपक, इक्वल अपॉर्चुनिटी की आपने बात की तो निश्चित तौर पर जैसे जनरल मुकाबले हम देखते हैं, इस मुकाबले को भी ठीक वैसे ही संपन्न यहाँ करवाया जा रहा है। पहले आपको एक अटेम्प्ट मिलता है, उसके बाद आपके साथी खिलाड़ी अपना पहला अटेम्प्ट ले रहे हैं, फिर दूसरा अटेम्प्ट, फिर साथी खिलाड़ी दूसरा अटेम्प्ट। तो 1 बाय 1 आपको यहाँ मौका मिल रहा है दूसरे खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखने का और उसके आधार पर अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन उससे पहले जो मूवेबल में थोड़ा सा चेयर से थ्रो किया और इस बार ये एक बार फिर मेडल सेरेमनी के लिए मंच तैयार है। आप मेडल जीतिए
और प्रदर्शन कीजिए और मेडल जीतिए। एक तरीके से 1 by 1, यहाँ प्रयास और यहाँ सफलता साथ साथ चलते हुए। और लोकेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, राजधानी दिल्ली। विजय मुस्कान, डिटर्मिनेशन, हौसलों की उड़ान। पैरा गेम्स 2023, खेलो इंडिया। जब से This is the award ceremony for the men's 100-meter run, T35 and T36. The gold medal went to Chirag of Delhi with a time of 13.49. The silver went to Anirudh Chaudhary, 14.39. And the bronze went to Narayan Thakur, also of Delhi, who has won a bronze medal recently at the Asian Games. On your extreme right on the screen is Narayan Thakur, the bronze medal winner. Here's the gold medal winner. जी हाँ, हमने देखा था कि चौथे स्थान पर रहे थे वो भी दिल्ली के ही खिलाड़ी थे, जतिन। रुपिंदर, निश्चित तौर पर दिल्ली में ये खेल हो रहे हैं तो दिल्ली के लड़कों में जोश दोगुना है। और ये देखिए, मेडल मिलते ही चेहरे पर जो रंग है उसमें भी निखार देखने को मिलता है। हंसने की, मुस्कुराने की वजह जिंदगी में छोटी छोटी सफलताएं जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। Senior official in the Paralympic Committee. He himself is visually impaired, Now I would request delegates giving and away the winners to medals gather in to front the of the podium for the T35, official T36 photograph. 100-meter winners. और ये साई के ऑफिशियल अभिनव शर्मा नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है खेलो इंडिया के जितने भी इवेंट होते हैं सब Many, में। many congratulations to the achievers. We thank our guests for joining Here us we today must for the medal ceremony. really appreciate Thank the you effort so of much and Chirag, an congratulations up-and-coming once again. youngster for which these Khelo India Para Games has exactly been organized. He beat the long experienced Narayan Thakur, who had won a gold in 2018 Jakarta Games, won a bronze this time in 2023 at Hangzhou, and now beaten by this young boy Chirag. That is the inspiration these Khelo India Para Games will be giving the youngsters. और ये एक्शन एक बार फिर स्क्रीन पर डिस्कस थ्रो का, निधि मिश्रा दिल्ली की। बहुत बेहतरीन प्रदर्शन, यहाँ पर स्टार खिलाड़ी हैं ये और सभी की निगाहें फिलहाल इन्हीं पर लगी हुई हैं। गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार, नाम के अनुरूप प्रदर्शन भी, और सच में कहा जाए तो दिल्ली की निधि हैं ये। Absolutely. Someone to be proud of. Nidhi, hailing from a district in Uttar Pradesh. In fact, she was sitting at home when her father came to Delhi and traveling in a bus, met a visually impaired boy and asked him what he was doing there. He said, I'm studying here in a school. He said, can my daughter also come and study here? He said, yes, she's welcome. She came there in class 10, topped in the CBSC, topped in class 12. IP college lecturers paid for her education when she stayed in IP college, and then in JNU she did a doctorate and now is a professor in Shahid Bhagat Singh College. Professor of history, to be precise, and she's making history here. I think it's for the para athletes, and that's where I think a main differentiation comes, where the para athletes they put their heart and soul in this, because it's not just an event for them, it's a career.
It's a career and it gives them confidence. Imagine visual impairment, you walk into a discus throw, you've been left alone to perform on your own. As we switch to men's long jump, looks like this is the boy who won 100 meters from Orissa, who just won his, we saw the medal tally in the 100 meters ceremony, Pankaj Bhuye. And normally 100 meters people, because of their speed, do well in long jump, like Carl Lewis, primarily a 100-meter Olympic champion. He won 4 consecutive Olympic gold medals in bronze, in long jump. जी हाँ, ये मेंस लॉन्ग जंप T13 का मुकाबला फाइनल। ये हैं कपिल चौधरी, राजस्थान के, लॉन्ग जंप T13 के मुकाबले। इसमें आप देखेंगे बोडू श्री हरि आंध्र प्रदेश के, अक्षय संजय सुतार महाराष्ट्र के, मंगत हेमब्राम ओडिशा के, और उनके साथ ही ओडिशा के ही पंकज बूहे, उनको हम रनिंग में भी अभी मेडल वो जीत चुके हैं। और जैसे कि कार्ल लुइस की बात रुपेंद्र ने कही, मुझे याद है स्पोर्ट्स स्टार एक मैगजीन होती थी, आपको याद होगा था, फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ इज ए कार्ल लुइस। And I remember we organized the International Athletics Meet in 1989 here at this very Nehru Stadium. And the then President, Mr. Suresh Kalmadi, had invited Carl Lewis, and he competed here in a 100-meter race where he got beaten by an Austrian, Andreas Berger. जी, मंगत हेमब्राम का ये जो पहला प्रयास था ये सफल नहीं कर रहा, वो फाउल करा दिया गया। और अब ये है सचिन रावल उत्तर प्रदेश के, 602 उत्तर प्रदेश के सचिन रावल। ये देखिए बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया है, पूरी ताकत झोंक दी है, शक्ति को समेटा है और लक्ष्य का संधान किया है। देखना होगा 5 मीटर के आसपास। And we can see right दूसरा प्रयास इनका सफल नहीं रहा। पहले प्रयास में 3.59 मीटर की दूरी इन्होंने तय की थी। and we can see the from the commentary box, the long jump arena is there, and we can see the players live, and we can appreciate the effort. And T13, just for the viewers, once again to remind them, it's for visually impaired athletes, and we see bib number 110. Srihari Bodhu of Andhra Pradesh. Very good attempt by him. Let's wait and watch what the distance is. The first one was a foul. This was the second attempt, it looks like to me. And Rupinder, this is coming when they have a visual impairment, restricted field of view, peripheral vision is limited. They don't know, they may not know where they are going to land. So Exactly. it's a brave attempt. Yes, and that's why we'll see a lot of red flags during the competition. But here's a white flag now for this jumper 412. जी हाँ, अक्षय संजय सुतार महाराष्ट्र के, बहुत बढ़िया इन्होंने ये रन लिया और उसके बाद ये सफल, बिल्कुल फेयर ये जंप कही जाएगी, 5.5 मीटर के आसपास, जी नहीं 5.03 मीटर। बहुत बढ़िया पहला प्रयास सफल, 5.03 मीटर। And from the looks of it, currently in the lead,
Akshay Sutar of Maharashtra with a leap of 5.03 meters. लॉन्ग जंप, इससे पहले हाई जंप के मुकाबले हमने देखे थे और अब ये लॉन्ग जंप, ट्रैक एंड फील्ड के ये मुकाबले चल रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। खूबसूरत ये माहौल, यहाँ का दर्शक भी आए हैं देखने के लिए। और अब आउटसाइड मेंस, ये रिजल्ट बोधू श्री हरि 5.50 मीटर के साथ और अक्षय संजय सुतार 5.29 मीटर के साथ, मंगत हेमब्राम 5.06 मीटर के साथ फिनिश किया है इस रेस को। बोधू श्री हरि नंबर 1, अक्षय सुतार, ये रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट। और मंगत हेमब्राम ने कांस्य पदक जीता है एक तरीके से, अक्षय संजय सुतार सेकंड और बोधू श्री हरि गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। फाइनल ये मुकाबला मेडल का ये मुकाबला था। And Pankaj Bhuhe, who won the gold in the 100 meter in his category, is running 4th right now as the competition continues. And that's Kapil Chaudhary of Rajasthan, bib number 482, T13 category. It's gonna be his first attempt. Let's see. जी हाँ, कपिल चौधरी ये 3 प्लेयर का अभी हो चुका है, वो रिजल्ट नहीं है, वो चार्ट अभी है दरअसल। अभी ये 3 खिलाड़ी और बाकी। लॉन्ग जंप T13 का ये मुकाबला, चार्ट लीडर भी बदल भी सकते हैं। कपिल चौधरी के दोनों ही प्रयास अभी फेल करार दिए गए हैं। और अब ये 429 जी मंगत हेमब्राम जो अभी तक चार्ट में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। देखना होगा क्या फेर बदल होता है। लेकिन फिलहाल देखना होगा फ्लैग अप है या नहीं। कोशिश बहुत अच्छी थी, अभी तक चार्ट में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। जंप लिया और उसके बाद एक तरीके से लैंड करते हुए मिट्टी में। Rupinder, what's your view on the long jumpers? You have been a coach and you are actively coaching athletes. Is it advisable to land on your knees, as we see? A couple of players, they did that. What would be your recommendation to viewers, especially para-athletic, aspirants? All long jumpers are advised to extend their legs and land and then move forward, because this one has done as rightly. He didn't go back. So if you land with an extended foot movement and then move your body ahead after jumping, you get the best distance. You get the best distance, you avoid any injury to your spine, versus what we just saw in a couple of athletes landing almost on their knees, bending their knees with a heightened risk of injury. I guess so. I'm not a coach, but Rupinder, banking on your experience. Exactly. Although to a large extent technically people are aware that this is going to be the problem, and so the pits are created in such a way that the landing is soft enough and does not harm them too much. Bodhi Srihari of Andhra Pradesh now. Visual impairment, keep that in mind. View and see for yourself. जी हाँ, अभी तक जो चार्ट है उसमें लीड कर रहे हैं, पहले स्थान पर हैं और ये भी सफल प्रयास है। लेकिन देखना होगा क्या दूरी जो उन्होंने पहले तय की है उससे ज्यादा है, तभी
अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं, लेकिन चाहेंगे ये जो पहला स्थान है इसको सील करें। और यही देखिए पूरी ताकत लगाई है, वो चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि खिलाड़ी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं अपनी ओर से। ये देखिए पूरी ताकत झोंक दी है। बहुत बढ़िया ये रन था, 5 मीटर से ज्यादा निश्चित तौर पर। And he gets no jump for that one. और अब अक्षय संजय सुतार महाराष्ट्र के चार्ट में दूसरे स्थान पर अभी इसमें। पूरा टाइम ले रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 412 बिब नंबर अक्षय संजय सुतार महाराष्ट्र के T13 लोग जंप कैटेगरी। टक्कर है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में। ये फाइनल है, मेडल मुकाबला है और खिलाड़ी चाहेंगे कि यहाँ कम से कम एक मेडल तो लेकर जाएं, खाली हाथ ना लौटना पड़े। और उसी की तैयारी निश्चित तौर पर करके भी आए हैं। और ये हौसलों की उड़ान। Rupinder, what's your view again on a player, let's say F11 competing in F13 for a different event? We'll come back to that in a while. जी हाँ, ये बहुत खूबसूरती। Normally what happens is when you come towards the end of your jumping, you want to increase your jumps and it results in a foul jump. The idea is you've already secured your position, now let me improve upon my previous attempts. And in that kind of enthusiasm, what happens normally is in the 4th, 5th, 6th jumps, you tend to overstep. जी हाँ, अगर चार्ट की बात करें तो अब ये बदल गया है। पंकज बूहे ओडिशा के अब तीसरे स्थान पर आ गए हैं। और पहले जो चार्ट था वो बोधू श्रीहरि, वो अभी भी लीड कर रहे हैं। उसके बाद अक्षय संजय सुतार महाराष्ट्र के, वो सेकंड नंबर पर बने हुए हैं। लेकिन मंगत हेमब्रैम को रिप्लेस कर दिया है उन्हीं के राज्य के पंकज बूहे ने। उन्होंने स्कोर किया है 5.20 मीटर, जबकि मंगत हेमब्राम का स्कोर है 5.06 मीटर। टॉप पर है बोधू श्रीहरि 5.50 मीटर के साथ और अक्षय संजय सुतार महाराष्ट्र के 5.29 मीटर के साथ महाराष्ट्र के दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। I think Bodhu Srihari is a clear winner here because 5.29 versus 5.50, that's a very clear demarcation and difference which after so many attempts you generally can't exceed. Rupinder. जी हाँ, ये कपिल चौधरी राजस्थान के। I agree. What happens is Srihari Bodhu, if you watch his jump, if he comes up now, is more of the lean, lithe category in which he has a very good explosion. In contrast, Pankaj Bhuwe, who won the 100 meters from Odisha, has a physique which he should do exceedingly well with good coaching and probably even touch 6 meters from what I can look at it. I think explosive power is what this and in fact javelin has a lot of dependency on generating that explosive power where it's not about the run up, it's about the explosion that you create, especially in the hamstrings. And we see that a lot of for example bib number 602, we see that the physique could be slightly heavier, but
if you have that power and that explosive power, especially in your hamstrings and your calves, that really helps you move forward and create that explosion. And that's what I think these Rupinder, these games are all about, right? Yes, in this case, it's the rhythm of the run-up and how you convert that speed into height, and then with a proper technique, the landing with your elevated legs so that you don't land, as you said, on your knees and fall behind. This one is landing very well, Sachin. Sachin Raval from UP, and now we have again landing on the knees, something that Rupinder and I talked about a while back. Bib number 429, that's Mangat Himbram from Odisha. जी हाँ, बिल्कुल फेयर ये जंप है, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट लिया था ओडिशा का ये खिलाड़ी मंगत हेम्ब्राम। पहले थर्ड पे थे लेकिन फिर रिप्लेस किया पंकज बूहे ने इनको, और अब इनकी कोशिश यही कि दोबारा जो अपना खोया हुआ स्थान है उसे प्राप्त किया जाए। लेकिन फिलहाल स्कोर अभी तक सिर्फ मात्र इनका जो सेकंड प्रयास है वो 5.06 मीटर के साथ सफल है। Next on the run-up is Pankaj Bhuhe as we switch towards the 100 meters on the track. The women's 100-meter run T35. जी हाँ, लेन नंबर 3 में है सुनेत्रा राजस्थान की, लेन नंबर 4 में है प्राची अंडमान एंड निकोबार की, लेन नंबर 5 में है जीतू कुमार कंवर दिल्ली की, और लेन नंबर 6 में है अवनी हरियाणा की, लेन नंबर 7 प्रीति पाल उत्तर प्रदेश से। आपके सामने अब से यह मुकाबला 100 मीटर T35 का। लेन नंबर 3 येलो ड्रेस में सुनेत्रा राजस्थान की, लेन नंबर 5 प्राची अंडमान एंड निकोबार की, लेन नंबर 6 अवनी हरियाणा की। हरियाणा की अवनी हाइट आप देखिए, राजस्थान सुनेत्रा, और लेन नंबर 7 में है प्रीतिपाल उत्तर प्रदेश की खिलाड़ी। And again, a technical point here. I don't know how many viewers, so I want you to observe the limbs, especially the legs for these runners. Some of them might have, a blade below their knees, but this category is mainly about, coordination affected to a low degree in the trunk and the arms, with a moderately affected legs. And these athletes, they achieve speed by utilizing a short and fast ride. So you will see that typically, their stride is going to be very, very short, not very typical of a 100-meter athlete, but they're very fast. If my memory serves me right, Preeti Pal of Uttar Pradesh represented India at the Hangzhou Asian Games and finished 4th in both the 100 meters and the 200 meters, just missing out on a medal at the Asian Games. So it looks like she could be the favorite in this event. That's right. You, Rupinder, you're absolutely right. Preeti Pal, parathlete from Meerut. She narrowly missed the medal at the Asian Para Games in China. In fact, she lost out by a fraction of seconds in the 100 and 200 races due to, several reasons. Similarly, other para-athletes like, Suvarna and Tripti Rajput, they face challenges. But at the same time, these are, very well names in this category. And let's see. Losing by milliseconds, that's a long distance, especially in 100 meters. And ask Preeti Pal about the importance of a millisecond. Yes, that's the ignominy of finishing 4th in any event. And I saw her finishing 4th after being in 3rd position in 100 meter just at the tape,
and a similar kind of a repetition in the 200 meters where she was in the third position till 195 meters and lost out in that last 5 meters. जी हाँ, मिल्खा सिंह, पीटी उषा, ये वो नाम है जो लास्ट सेकंड के 100वें हिस्से से मेडल को लूज कर गए थे. But imagine losing that twice, both in 100 and 200. Quite unfortunate, I would say. But a very, very talented athlete, and let's see how that happens here. And I must remind the viewers, we have in the same event, women's T35, we have Prachi Topo from Andaman and Nicobar. The furthest part of India, we have a representation from that, and that's what I think inclusion is all about. That's what diversity is all about, which is promoted even by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Prachi Topo from Andaman and Nicobar, Jitu Kumar from Delhi, Agni Haryana, Sunetra Rajasthan, and it started. And as on expected lines, Preeti Pal dominating this one right from the start to finish. Nothing to worry for her this time. No one's chasing you down. There you go. Preeti Pal, the gold medal winner by a huge distance, showing all her experience. जी हाँ, दूर रहो चक्कर से, कोई नहीं है टक्कर में. प्रीति पाल का बिल्कुल यही ऐलान एक तरीके से लेन नंबर 7 से सीधा बहुत पीछे छोड़ दिया अपनी प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों को. लेन नंबर 7 में प्रीति दूर दूर तक एकदम निश्चित तौर पर T35 विमेंस 100 मीटर का ये मुकाबला. फाइनल स्कोर अब से थोड़ी ही देर में. So while we wait for the scores for women's 100 meter T35 run, we are back on the high jump track. Sorry, apologies, the long jump. बोधू श्री हरि अभी तक का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर ये खिलाड़ी इस मुकाबले में टॉप पर बना हुआ है. और यहाँ पर भी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, एक के बाद एक प्रयास, बेहतरीन प्रयास कहे जाएंगे ये. जी हाँ, बोधू श्री हरि आंध्र प्रदेश का ये खिलाड़ी निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की चुनौती को पेश करते हुए नजर आएगा. जो फिलहाल प्रदर्शन है निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया. क्या बॉडी लैंग्वेज है, कॉन्फिडेंस है, ये देखिए जबरदस्त स्टार्ट, बहुत बढ़िया. बिल्कुल विजेता की तरह यहाँ पर खेल रहे हैं बोधू श्री हरि. प्रभावित किया इस खिलाड़ी ने सबको. दर्शक दीर्घा में तालियों की गड़गड़ाहट स्वागत किया इस प्रदर्शन का. और अब कपिल चौधरी राजस्थान के. जी हाँ, स्कोर प्रीति पाल 15.65 सेकंड के साथ लीड किया है, टॉप किया है. हरियाणा की अवनी दूसरे स्थान पर रही हैं 21.68 के साथ. और जीतू कंवर दिल्ली की रही हैं तीसरे स्थान पर 23.81 सेकंड के साथ. सुनेत्रा राजस्थान की जो थी लेन नंबर 3 में, वो है
26.88 सेकंड के साथ। बहुत बढ़िया कड़िया संघर्ष यहां देखने को मिला, लेकिन प्रीति पाल का ये प्रदर्शन निश्चित तौर पर याद रखा जाएगा। एक तरफा बढ़त उन्होंने बनाई, कोई मौका नहीं दिया। 100 मीटर में आप सोचिए 15.65 गोल्ड मेडल के लिए स्कोर और सिल्वर के लिए 21.68 का स्कोर। बहुत बढ़िया ये प्रदर्शन। और अब ये लॉन्ग जंप, इसके 6 अटेम्प्ट, ऑलमोस्ट 6 अटेम्प्ट ही हमें देखने को मिले हैं। डिस्कस, शॉर्ट पुट, जैवलिन थ्रो, और इस 6 अटेम्प्ट में ही आपको वो अटेम्प्ट करके दिखाना होता है जो आपको मेडल दिलवाए। Rupinder, from an international landscape perspective, we have seen that in the last few years, India has really come up, especially in events like 100 meter, 1500 meter. But do you think that India still has a long way to go? I mean, we are catching up in terms of archery. Definitely in the javelin we have made that mark. But do you think that in racing events we still have a long way to go? What do you think? Absolutely. If you judge it from the point of view of the Para-Asian Games, our track athletes have started to get medals. But at the Para-Olympics, we still have to get a medal on the track. It's all been high jump and javelin throw and shot put from Deepa Malik. These have been the main medals at the Paralympic athletics up till now. What do you think could be the reason for India's dominance in the javelin, especially? If I talk about the both the para as well as the able-bodied. विमेंस 100 मीटर का ये रन है T36 और T37 कैटेगरी में, और इसी के साथ And the lead runner, Devika Malik, the daughter of Deepa Malik, the president of the Paralympic Committee of India. She represented India at the Hangzhou Asian Games. Didn't get a medal, but definitely deserved to be there. Look at her performance. She's running out of lane 3. Devika Malik, the daughter of the famous Deepa Malik, the first female athlete to get a medal at the Paralympics. जी हाँ, देविका मलिक हरियाणा की 17.47 के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया है यहाँ पर, और श्रीदा बहा असम 17.90 का समय उनका है। सेकंड में स्थान पर, दूसरे स्थान पर वो है, और प्रियंका शर दिल्ली की 19.40 सेकंड के साथ। हर्षिता देते कर्नाटका की 20.27 सेकंड के साथ उन्होंने इस रेस को पूरा किया है, और बिना मोरदिया गुजरात की 21.03 सेकंड के साथ इस रेस को उन्होंने कंप्लीट किया है। विमेंस 100 मीटर का रन T36 और T37 कैटेगरी। As we were expecting, Pankaj Bhuye from 4th came 3rd and now is 2nd at 5.33 behind Bodhu Srihari of Andhra Pradesh at the gold medal position at 5.50. This is Satar of Maharashtra. जी हाँ, इन्होंने अब ये दूसरे स्थान पर ये बने हुए थे, लेकिन पंकज बूहे ने इनको पछाड़ते हुए तीसरे स्थान पर धकेल दिया। पहले स्टार्टिंग में पंकज बूहे चौथे स्थान पर थे, पहले अपने ही राज्य के मंगत बेहमराम को उन्होंने पीछे छोड़ा, और फिर महाराष्ट्र के सुतार को भी। पंकज बूहे गोल्ड मेडल हासिल किया ये महाराष्ट्र के। देखिए बहुत बढ़िया इनका ये प्रदर्शन रहा अभी तक। मंगत हेमब्राम ओडिशा के पहले बने हुए थे। अक्षय संजय सुतार 5.29 दूसरे प्रयास का इनका ये स्कोर, इन्होंने मेडल हासिल किया, और ये हैं पंकज बूहे। पंकज बूहे ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, ओडिशा का ये खिलाड़ी।
And it will be worth seeing whether he gets his second gold. He'd won, remember, the 100-meter goal earlier in the morning, and this one he's come from fourth to third to second. And will this last jump give him a second gold, or will Bhui of Andhra Pradesh run away with the gold in this event? जी हाँ, बोधू श्री हरि अभी तक लीड कर रहे हैं। ये 5.33 का समय टॉप इनका रहा है पंकज बुहे का। ये लास्ट अटेम्प्ट बोधू श्री हरि का, ये देखना होगा हौसले की उड़ान इनकी, ये जंप कितनी लॉन्ग रही। लॉन्ग जंप का ये मुकाबला देखिए, पहले प्रयास से ही प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने। बोधू श्री हरि T13 कैटेगरी में ये लॉन्ग जंप का मुकाबला, और शुरू से चार्ट में टॉप पर रहे हैं। और अब देखना होगा फाइनल स्कोर छठे अटेम्प्ट के बाद क्या रहता है। अपनी सारी ताकत को झोंक दिया और फाइनल रिजल्ट अभी देखने को मिलेगा। ओडिशा के पंकज बूहे बिब नंबर 431 में। I think Pankaj has ended up injuring himself. I can see him lying on the tracks, and he's. I would now request Sarah Charles to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. बोधू श्री हरि, My apologies. That's Bodhu Shri Hari. Looks like that he has injured himself. He's limping his way to his stuff under the shade. But very good attempt, and now we are going to see Pankaj Bhue. 5.33, that was his best. 1500 meter T38 category, the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Kerala. Please put your hands together for Sri Ram M with the performance of 5 minutes 21 seconds. I would now request Mary Com ma'am to kindly present the medal to the winner. And that's Mary Com, very famous name in India, a household name in the world of boxing. And what a delight for the players to Thank be you so much, awarded ma'am. Now, medal the winner from of the silver medal the legend at herself, Khelo India Para Mary Com. Games representing Uttar Pradesh. Please put जी your हाँ, hands together बॉक्सिंग for की Sumit जब भी Kumar बात with the चलेगी performance of भारतीय 4 minutes परिप्रेक्ष्य में, 56 तो seconds. ये वो नाम है जो सबसे पहले हमारे जहन में I आता will now है, request मैरी Mr. कॉम। Abhinav sir to kindly और present रुपिंदर, the medal to इनकी the winner. प्रतिभा का क्या चलवा रहा है कि बॉलीवुड ने फिल्म तक बनाई है। प्रियंका चोपड़ा ने उसमें अभिनय किया था। बहुत ही शानदार करियर इस खिलाड़ी का रहा है, बहुत ही शानदार। Thank you so much, sir. Finally, boxer, world the champion winner 5 of the times gold over, medal at winner Khelo of India Para Olympic Games bronze, 2023, in representing 2012. Haryana. Please put your hands together And you know, for she came Raman on the Sharma front of with the boxing when performance women's of 4 boxing minutes was just 39 becoming part of the seconds. Olympic Games. I would now And again in fact, she request Mary runs an Com ma'am academy to of her kindly own in present the medal to the Manipur, winner. and we will see many more Mary Coms coming. जब अपनी फील्ड के किसी सफल खिलाड़ी से मेडल प्राप्त करता है खिलाड़ी, तो उसकी जो खुशी होती है वो दो गुनी हो जाती है। और जिसे कहा जाता है कि जैसे जैसे वृक्ष पर Now फल आते requesting हैं the वो dignitaries और and ज्यादा the winners together in front of the podium for the official झुकने photograph. लगता है। तो जैसे जैसे खिलाड़ी बड़ा बनता है, इंसान बड़ा बनता है, तो वो एलिमेंट देखने को मिलता है। और वही यहाँ मैरी कॉम, अभिनव शर्मा साई ऑफिशियल और मैरी कॉम विजेता खिलाड़ियों के साथ स्क्रीन पर। Tremendous inspiration for these winners. Not only have they had an opportunity to excel and win medals, they've been We thank presented a our medal achievers by a and legend, Mary Com. Thank you so much, guests, for joining us today for the That's medal where- ceremony. why we Congratulations say- once again. Rupinder, that it's not just about the medal, it's about the participation, it's about that social recognition that you get in the athletic circles, and the participation, I think from a societal perspective of legends like Mary Com and other couple of faces that we have seen who have come here to give their time
Okay, so men's long jump T13, the results are out. Bodhu Srihari 5.50, Pankaj Bhue 5.33, and Akshay Sutar 5.29. And I think this was an excellent competition. 6 jumps and the positions kept varying all the way. Only thing static was Srihari Bodhu, who led right from the outset and finished at 5.50. But if I was a talent scout, the man to watch out in the future will be Pankaj Bhue. And I'm sure a lot of people are going to take your advice very seriously, Rupinder. We see a lot of sponsorships coming in for obviously all the right reason, because that's the kind of support that the para athletes they require, they need, and they deserve, rightfully. The Indian para landscape definitely requires more support, more participation. It's coming up, but it's a long way ahead, and we need to keep pushing ourselves to recognize these players, their efforts, and especially what the government is doing by organizing this kind of a grand event. And Rupinder, we have seen the number of the effort, the amount of money and time and effort, and the the number of volunteers that we have seen getting involved in this. It's at a huge scale. And it's only the first day, and we've already spotted potential Asian Games, if not para champions, in the form of Rakesh, who upset Shreyansh Trivedi. Right now, Pankaj Bhue, who's shown excellent talent after winning the gold in the 100, coming back to win a silver in the long jump. So we've got lots to look forward to, and this is a first step and the step in the right direction. जी हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले, यही वो सोना है रुपेंद्र, जो दिल को ये तसल्ली देता है कि आने वाले समय में भारत का जो झंडा है वो बुलंद रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर. The badminton, the opening day yesterday, it showed us yesterday and today para badminton stars take the center stage at IGI Stadium. And okay, so moving on to one of the most famous sports in India currently, which is javelin throw. All thanks to Neeraj Chopra and his stupendous performance, Sumit Until. And we have some good names here. Men's javelin throw F56, 57, Mohammad Sarfaraz from Delhi, 40.09, a healthy score. Hemchandra from Uttarakhand, 35.74. That's again a significant difference of 5 meters. So again, Mohammad Sarfaraz is there on the mark. Pawan Kumar from UP, 34.26. And then, we have rest of the players. So another excellent result from the field. You will notice this is outside the main arena where they are having the events in throwing. The main track events are in the main arena inside the Nehru Stadium. That's a 600 grams of javelin, Rupinder. 600 grams. The toll it takes on your shoulder. And it's F53, 54 category. Again, a test of knowledge for our viewers. F is field, and when we talk about 53, obviously, you can imagine that it's the amount of severity. It decreases as the number is higher, but again, it is for field athletes. Movement affected to trunk and legs, hand grip, and you've seen that they hold that pole right adjacent to them, to their seat. They are strapped onto their seat, and while seating, they generate the inertia and throw the javelin. It's 600 grams.
And for that category, this was a lovely performance. 40.09 from Sarvaraz. जी सर हाँ सर सर मैं भेजता हूँ फोटो किसी भेज रहा हूँ जी सर Okay, that's women's 100-meter run, T47. Players are ready. जी हाँ इसी के साथ ये मुकाबला शुरू और ये खत्म देखना होगा 4-5 लैन नंबर 7 में जयंती बेहर ओडिशा की 13.40 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है विमेंस 100 मीटर रन T47 कैटेगरी में। तमिलनाडु की अमूल्या दूसरे स्थान पर रही हैं 16.95 के साथ और जी हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन जयंती बेहर ओडिशा की 13.40 के साथ टॉप पर हैं और ये देखिए भवानी वाला आंध्र प्रदेश की 14.55 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर तृप्ति राजपूत उत्तर प्रदेश की है तीसरे स्थान पर 15.49 सेकंड के साथ अमूल्या ईश्वा तमिलनाडु की 16.95 सेकंड के साथ और अनुराधा उत्तर प्रदेश की इन्होंने फिनिश किया है 16.95 सेकंड के साथ इस रेस को विमेंस 100 मीटर रन T47 कैटेगरी। Now we see it's women's 100-meter run, T53 and T54. Severe impairment in legs and trunk. We have 3 contenders, 2 from Tamil Nadu and 1 from Maharashtra. Kiran, Geeta, Kalai Selvi. And here you see them accelerate forward using the grip of their hand and directing.
विमेंस 100 मीटर रन T53 T54। गीता चौहान है महाराष्ट्र की, करिया सेल्वी हैं तमिलनाडु की, और तमिलनाडु की ही तीसरी खिलाड़ी हैं किरण श्रीराम मेटकार। ये 3 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। And that's a specialized wheelchair that they are using, and they will have full function in the body with affected movement in legs or the absence of limbs, like I mentioned earlier. But they can generate, full range of body arm movements. Legs play no part in this race, and it's completely dependent on the movement of their hands. And obviously they are going to accelerate. They are trying to win the race through the power in their hands. And you would have seen at an international scale as well, this is a very famous format. It's a very famous event. Absolutely. If you watch the world marathons in London, Boston, etc., it's a specialized event there. And in fact, the wheelchair timing is better than the able-bodied world record timing. They have clocked much below 2 hours. As we watch these three now embark on the 100-meter sprint, T53 and T54. Kiran Sriram of Tamil Nadu in the lead. And from the outside, Kalaswai of Tamil Nadu coming ahead of her. This is going to be a photo finish. And Geeta Chauhan of Maharashtra also overtaking the initial leader. जी हाँ, लेन नंबर 5 में कला सेल्वी तमिलनाडु की निश्चित तौर पर पहले ऐसा लगा था लेन नंबर 3 से लीड है, लेकिन फिर बाद में जी हाँ लेन नंबर 3 की लीड, लेकिन उसके बाद लेन नंबर 5 से लीड देखने को मिली। और यही है वो क्षण जहां पर उन्होंने आसानी से सफलतापूर्वक इस रेस को अपने नाम किया है। कैलाशवी तमिलनाडु की 24.55 सेकंड के साथ कंप्लीट किया है इस रेस को। देखिए यह खूबसूरत फिनिश। और महाराष्ट्र की 2 नंबर लेन में गीता चौहा, उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। एक बार ऐसा लगा था कि पिछड़ रही हैं, लेकिन बाद में तो एक तरीके से जो लेन नंबर 3 में लीड जरूर ली, लेकिन उसको बरकरार रखने में फेल रही किरण श्रीराम तमिलनाडु की, और तीसरा स्थान इस रेस में उन्होंने हासिल किया। Another interesting facet of the rules at the international level is if there are only 3 competitors in an event, only 2 will be awarded medals. And similarly, if there are 2 competitors in an event, only the first one will be given a medal. कई दोस्त जो फोर्थ आते थे ना, 4 ही लोग भागते थे, उसको लोग ज़्यादा छेड़ते थे। लास्ट आया, कहना मैं फोर्थ आया हूँ, मैंने तो नहीं रोका, पूरा इंडिया 1.4 करोड़ कोई भी आया, कोई भी मैं फोर्थ हूँ, लास्ट नहीं हूँ। और अब जेवलिन थ्रो का एक्साइटमेंट शुरू हो चुका है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कहाँ पे कौन सा नंबर है? 105 नहीं है। मुझे लगा 53 या 56 57 नंबर कैटेगरी है सर, वो नंबर नहीं बोल रहे। हाँ ये तो मैं देखा हूँ, तो कहाँ है वो? ये है ना 56 वुमेन्स है।
सर है इवेंट नंबर 66 मेंस जेवलिन थ्रो 62 है मेंस जेवलिन थ्रो F3 33 ये 64 है शायद या तो 53 57 है या फिर 64 F33 34 है नहीं सर F53 नहीं है ये 56 है स्ट्रैप के बांधने वाली है हाँ अभी वो कंफर्म कर ये तो मोहम्मद सरफराज तो पहले भी खेल चुका है वो तो डिस्कस में था ना, इसी में तो था डिस्कस था। ये है ना सर वो 56 साथ 57 में डिस्कस में फर्स्ट आया था, अब ये जावलिन। मेंस जेवलिन थ्रो F56 F57 कैटेगरी में प्रवीण कुमार लीड कर रहे हैं हरियाणा के 42.05 मीटर के साथ। मोहम्मद सरफराज दिल्ली के 40.09 सेकंड के साथ और आकाश मेहरा पंजाब के 37.02 मीटर के साथ और हेमचंद्र उत्तराखंड 35.74 मीटर के साथ। पवन कुमार 34.26 सेकंड के साथ बने हुए हैं। जेवलिन थ्रो F56 F57 का मुकाबला और ये खूबसूरत नज़ारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ट्रैक एंड फील्ड और धूप छाया की आंख मिचौली भी शुरू हो गई है जैसे जैसे भगवान भास्कर पश्चिम दिशा की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। ये देखिए अब धूप सिमटने लगी है और छाया अपना आकार बढ़ाने लगी है। जैसे लॉन्ग जंप में दिखा रहे हैं साथ साथ में कमेंट्री कर रहे हैं तो अभी ग्राउंड दिखा दिया इसमें अब इसमें क्या बोलोगे? ये तो कह रहा हूँ, खाली रिजल्ट बता दे। जैवलिन का से रिजल्ट बता दिया ना उनको दिखाना नहीं चाहिए हाँ उसको समझाना पड़ेगा भाई तो साहब, बता दो, क्योंकि बोल दो इनको। सर आप तो बोल ही सकते हो, हम तो हमारी तो कोई सुनेगा भी नहीं। हाँ, आपके सामने तो बोल भी नहीं पाएगा कोई। विक्की सर ने भी हमने देख देख के बोला है ना। और अब से थोड़ी ही देर में विमेंस 100 मीटर रन T63 एंड T64 कैटेगरी में ठाकुर निशा गुजरात की, भारती दिल्ली की, सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश की, पूजा हरियाणा की, संतोष राजस्थान की, पलक हरियाणा की, शालिनी शर्षा कर्नाटका की और एम भवानी अंडमान एंड निकोबार की। 8 लेन में ये रेस कंप्लीट की जाएगी। विमेंस 100 मीटर रन T63 एंड T64 कैटेगरी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं आता भाई जो तू लाया वहाँ से वही वेट है। मत करो अब मैं वहाँ से लेके आऊँ, क्या करूँ? Mr. Abhinav Sharma, Deputy Director of SAI, Sports Authority of India. चाहे तो ले ही आएगा। I would now request our ushers to guide the medal winners and guests towards the ceremony area. चार ये भी पी लेगी ना। चाहते हैं हम खूब खेलो साथ में है हम खेल में ही मस्ती है खेल तंदुरुस्ती है Starting with the men's 1500 meter run T46 category,
the winner of the bronze medal at Khelo India Para Games representing Delhi. Please put your hands together for Sumit Kumar with the performance of 4 minutes and 18 seconds. I would now request Mr. Sangram sir to kindly present the medal to the winner. छूना चाहते हैं हम उड़ चलो पंख देंगे हम खेल डर मिटाएगा जीतना सिखाएगा खेल से उड़ान देंगे हम Thank you so much, sir. Now, the winner of the silver medal at Khelo India Para Games representing Haryana. Please put your hands together for Pramod with the performance of 4.15 seconds. I would now request Mr. Abhinav sir to kindly present the medal to the winner. Thank you so much, sir. Finally, the winner of the gold medal at Khelo India Para Games 2023 representing Rajasthan. Please put your hands together for Vikram Kumar Meena with a performance of 4 minutes 14 seconds. I would again request Sangram sir to kindly present the medal to the winner. दुनिया को हिलाएंगे खेल के दिखाएंगे हम नहीं है किसी से कम Thank you so much, sir. Now requesting the dignitaries and the winners together in front of the podium for the official photograph. Many congratulations, achievers. We thank our guests for joining us today for the medal ceremony. Thank you so much and congratulations once again.
Men's shot put F54. Rajneesh. विमेंस जेवलिन थ्रो के ये मुकाबले चलते हुए पूजा धन का राजस्थान की ये खिलाड़ी जेवलिन थ्रो F33 एंड F34 अभी अपने अटेम्प्ट लेते हुए इनके साथ है भाग्यश्री एम जाधव महाराष्ट्र की और सरिता कुमारी राजस्थान की। जो पूजा धांका का अभी तक का स्कोर है वो है 6.79 मीटर। तीन ही खिलाड़ी इस इवेंट में हैं तो 2 मेडल दिए जाएंगे, गोल्ड और सिल्वर। फाइनल ये मुकाबला है। अब भाग्यश्री एम जाधव है महाराष्ट्र की, पूजा धनका राजस्थान की और उनकी टक्कर सरिता कुमारी से राजस्थान की। तीन खिलाड़ी हैं इस मुकाबले में। देखिए बहुत बढ़िया प्रयास करने की कोशिश थी लेकिन यह फेल अटेम्प्ट इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो स्पीयर का पॉइंट होता है वो टच होना चाहिए ग्राउंड से। सात इवेंट है यहां पर। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है दिल्ली में।
अब राजस्थान की सरिता कुमारी अपने जैवलिन थ्रो के लिए तैयार। जी हाँ, यह बिल्कुल सफल थ्रो कहा जाएगा। दूरी देखनी होगी। ये प्रैक्टिस देखना है, क्योंकि फ्लैग अभी नजर नहीं आया है। अभी रेड फ्लैग और व्हाइट फ्लैग दोनों फोल्ड की पोजीशन में नजर आ रहे थे। अब देखिए, अब बाहर आए। यहां चेक होगा क्या अटेम्प्ट है। कोशिश अच्छी, लेकिन जी हाँ, वो जो प्रयास थे वो अब कंप्लीट होते हुए। इस इवेंट के बाद हाई जंप की तैयारियां भी। अगला अटेम्प्ट, यह भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट। और यही वो भाला है जिसने 130 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों को गर्व के क्षण दिए थे टोक्यो ओलंपिक में, जब नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स का 100 साल से ज्यादा का सूखा धो दिया था अपने गोल्ड मेडल से। और अपने उस मेडल को ट्रिब्यूट किया था उन्होंने लेजेंड मिल्खा सिंह के लिए। बहुत बढ़िया, कोशिश अच्छी। अब दूरी के लिए गए हैं। सरिता कुमारी राजस्थान की अपने अटेम्प्ट लेते हुए। जी हाँ, अटेम्प्ट काउंट किए गए हैं। ये स्कोर है। पहला जो प्रयास था वो फेल हो गया था, और दूसरे प्रयास में 6.12 मीटर, तीसरे में 6.55 मीटर, चौथे में 6.70 मीटर, और पांचवा और छठा अभी भी 2 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। ये देखिए, ये 5वें अटेम्प्ट के लिए गई हैं, और अब इसको भी चेक किया जाएगा। और इसके बाद एक प्रयास और बचेगा सरिता कुमारी के लिए। जी हाँ, और अब ये तैयारी है विमेन 100 मीटर रन T63 एंड T64। लेन नंबर 1 में है ठाकुर अनिशा गुजरात की, लेन नंबर 2 में भारती दिल्ली की, लेन नंबर 3 में सुमन कुमारी हिमाचल प्रदेश की, लेन नंबर 4 में है पूजा हरियाणा की, लेन नंबर 5 में संतोष राजस्थान की, और हरियाणा की पलक है लेन नंबर 6 में कर्नाटका की शालिनी सारस्वत, लेन नंबर 7 में, और एम भवानी अंडमान एंड निकोबार की लेन नंबर 8 में। विमेंस 100 मीटर रन T63 एंड
64 कैटेगरी। इंतजार गन शॉट का, ये फाउल प्ले देखना होगा क्या चेतावनी दी जाएगी। अगर आप समय से पहले स्टार्ट करते हैं तो ये एक चेतावनी दी जाती है, डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, लेकिन यहां पर रूल्स थोड़े रुपिंदर लिबरल रखे गए हैं। जी हाँ, नॉर्मल में एक फाउल स्टार्ट से ही बाहर किया जाता है आजकल, क्योंकि टेलीविज़न का ज़माना है, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। अगर 8 जने एक एक फाउल करें तो 8 मिनट वहीं गैप लग जाते हैं। तो वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और यहाँ पे T63, 64, you will see that some of the players, they are running with a blade. In some cases it's a blade in one leg, in some cases it's a blade in two legs, but look at that grit and see the positioning it gives. जी हाँ, लेन नंबर 4 में पूजा हरियाणा की, और ऑस्कर पिस्टोरियस अगर याद हो तो वो बिल्कुल इसी तरीके से दौड़ते थे। ब्लेड रनर भी रुपेंद्र उन्हें कहा जाता था। Exactly. We've got a local girl in lane 2, Bharti, who has represented India in international meets. We've got Palak from Haryana. So it's going to be an interesting race. Here is that yellow card. Normally, if they were strict, it would have been a red card straight away. The original Blade Runner of India is Major D.P. Singh. With his maiden efforts, Major D.P. Singh became the first person in India to run a marathon on an artificial limb, and first ever to run on blade prosthesis. And he, in fact, has been one of the prime motivations behind the Army Paralympic mode. Rupinder, if I'm not mistaken. Yes, a Kargil war hero. As we concentrate now on the 100-meter run, T63 and T64. And there we go, Nisha from Gujarat running a brilliant race. And the Blade Runner in lane 7, I think. Shalini lagging behind, trying to catch up. And it seems Nisha of Gujarat has come away first. And the Blade Runner looked as if she was second. Blade Runner was Shalini Saraswat of Karnataka. जी हाँ, देखिए कितनी खूबसूरती से शुरू किया है लेन नंबर 1 में निशा गुजरात की, और ये लेन नंबर 7 में ब्लेड रनर। थोड़ा सा ऐसा लगा था जैसे पूजा हो, लेकिन ये है शालिनी। बहुत बढ़िया, दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। कर्नाटका की खिलाड़ी है, 17.33 सेकंड के साथ दूसरा स्थान। निशा 17.32 सेकंड के साथ पहला स्थान, और तीसरे स्थान पर पलक हरियाणा की 18.99 सेकंड के साथ इस रेस को जीत लिया है। 100 मीटर रन T63 and T64 category. Look at that result, 17.32 first, 17.33 the Blade Runner second. What a great race it was. I feel Shalini was somehow controlling the power in the blades. And I could see her, consciously very controlling, her sprint, Rupinder. As if, somewhat, scared of not tripping down. But I think, she could have, truly harnessed the power of the blade, is what I feel. Perhaps early days for her, but Thakur Nisha, very impressive, very thin, lean girl, unlike a sprinter in that first lane, emerging victorious with 17.32 seconds. And that's the difference of a millisecond there. Men's 100 meter run T11, JM Shawat कर्नाटका, मदन हरियाणा, रमन जी दिल्ली और गुरवीर सिंह पंजाब।
These people had qualified in the morning through the heats and they are now coming back for the final. We saw how Gurveer won his heat. We saw how Madan of Haryana won his heat. Ramanjit was second in that one and Shavad won his heat. So all the winners of the heats now here in the final. Remember, it's T11, so you have to leave a lane in between and we can have only 4 runners in the final. दो ही मदन गुरवीर शुभम हीट 1 के अंदर था और सुजीत हीट 2 के अंदर था. मदन के 12-52 थे, गुरवीर के 14-32 थे. हाँ, मदन फर्स्ट था भाई, 12-52 थे ना. अच्छा, मदन फर्स्ट था, गुरवीर 14-32 से सेकंड था. अरे भाई जीतू को इसने बोला जीतू को फोन कर. लेकिन तू क्यों लेके आ रहा है यार? किसी और को भेज देता ना. इनके लिए लानी पड़ेगी और किसी के लिए तो नहीं ला रहा हूँ. गुरु के लिए ले आए तो क्या हो गया. बहुत बढ़िया भाई. हाँ 4 में 5 लाख उस टेबल पे रखे हुए. घबरा मत, इसको फॉलो कर और हमें जो ये आ जाए, बाकी इनको छोड़. सो ये हीट 1 और हीट 2 का T11 में ही होगा ना. T11 में 2 हीट हुई. हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड ये लिए. Tea, water, food, everything is much needed. Water actually, I don't have a car today, so they are not even allowing us inside. कल से मैम मैं हाँ कल से मैं खुद का पानी वाली तो ले ही आऊँगी. खाना वाला सब ले आएंगे. Food, हाँ कुछ ऐसे रोल खाना तो मैं एक्चुअली लेके आया हूँ. सैंडविच If you want to have some paratha, you can. I went with them when we went and all. But I think it's a good idea to get some sandwich and at least a bottle of water. या आप कुछ नहीं कर पाओ. Also with the commentary and all time नहीं लगेगा. उनके पास कहाँ है? उनके पास लाइव कर सकते हैं. वो शुक्र है कि थोड़ा बहुत ले आया है. नहीं अब मैं तुम्हारा फर्स्ट डे कल से मैं भी लेके आऊँगी. और जेवलिन थ्रो का एक्शन एक बार फिर. रुपिंदर सर, ये चाय रखिए ध्यान से. क्या है इसमें? आ गया फिर से. विमेन का ये है सर F33 हो गया. ये सर है F53-54 है सर. वो कौन सा है इवेंट नंबर? ये सर है 107. ये लड़की अपना चश्मा बड़ी नहीं पहनी. हाँ? ये अर्चना कुमारी, ये सिंपी रानी, ये कंचन लखानी, ये कंचन लखानी. पर ये लड़की कौन है? सर ये बिब नंबर ही लगाया हुआ है इसमें. वो 574 पीछे घूम रही है ना, सुवर्णा राज. ये यही है. 53-54 इवेंट है. ये सुवर्णा राज है. नहीं ये है सर. ये पता नहीं इसका कौन है. सर हवाबाजी हो रही है. ये आए तो दिखे. Guess what करना है? कौन कैसे बताएंगे? ना इसने इवेंट चल रहा है. सर ये लग रही है अर्चना कुमारी. जो टेक्निक होती है जेवलिन थ्रो में बहुत महत्वपूर्ण होती है. भाला फेंकने से पहले आपको अपनी तकनीक पर बहुत काम करना पड़ता है और अगर आप फेल रहते हैं तकनीक पर काम करने में तो रिजल्ट आपको ऐसा ही देखने को मिलता है. क्योंकि जो पॉइंट होता है स्पीयर का वो अगर ग्राउंड से टच नहीं करेगा तो वो फेयर थ्रो नहीं काउंट होगा. और ये निश्चित तौर पर निराश होंगी.
अपने इस प्रयास से, क्योंकि बहुत बड़ा ये मंच है। इसी इवेंट के अंदर हम देखेंगे कंचन लखानी, बहुत ही फेमस प्लेयर, नेशनल लेवल चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट 17 से 20। एक ट्रेन दुर्घटना के अंदर उनका चेस्ट डाउन, शी लॉस्ट द मोबिलिटी, बट वेरी टैलेंटेड प्लेयर। भाग्यश्री एम जाधव, महाराष्ट्र की। केवल 3 खिलाड़ी इस मुकाबले में बनी हुई हैं, पूजा ढांका और सरिता कुमारी। भाग्यश्री एम जाधव महाराष्ट्र की और 2 बाकी के खिलाड़ी राजस्थान की हैं। इस मुकाबले में मात्र 2 मेडल दिए जाएंगे क्योंकि 3 ही खिलाड़ी हैं, और ये भाग्यश्री एम जाधव अपने अटेम्प्ट पूरे करते हुए। जी हाँ, अपने छठे अटेम्प्ट में इन्होंने किया है 12.90, और स्कोर इनका जो सबसे बढ़िया है वो है 13.57 का। और ये है स्कोर अभी तक का। भाग्यश्री एम जाधव 13.57 टॉप स्कोर के साथ टॉप पर बनी हुई हैं। राजस्थान की सरिता कुमारी दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं। इनका जो टॉप स्कोर रहा वो रहा 7.18 मीटर, और पूजा ढांका राजस्थान की ही 6.79 मीटर की दूरी तय की इन्होंने अपने जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो F33 एंड F34 कैटेगरी में भाग्यश्री एम जाधव टॉप पर। और अब ये रिड्यूस्ड लेग मोबिलिटी लग रहा है ना। हाई जंप निकाल। मेंस हाई जंप T63 है, ये 38 में 38। तो मैंने क्या बोला, कुछ और बोला है? हाई जंप लॉन्ग जंप T63 ना, हाई जंप। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। तो 38 ही तो है गुरु, वो T63 बोल रहा है, हम इवेंट बोल रहे हैं। यही है सर। T42 ये 2 ही लड़के हैं। नहीं सर, इसमें ज़्यादा है, 4 आगे पीछे होंगे ना सर, इधर तो 7 है। 7 है, 2 उस पेज पे और 5 इस पेज पे। मरियप्पन भी तो इसी में है। इसी में है सर। और वरुण सिंह भाटी दोनों मेडल किए थे ना पैरा में। हाँ, हाई जंप में 2 मेडल आए थे ना उस टाइम। एशियन में थे ना सर ये? नहीं यहाँ पैरालंपिक्स 2016। अच्छा, मरियप्पन का गोल्ड, भाटी का सिल्वर था सर। हाँ मुझे पंगा सिल्वर था, रियो में गोल्ड था। रियो की तो बात कर रहा हूँ। 16 में यही था गुरु। एंड वरुण भाटी का ब्रॉन्ज। अब जो वरुण भाटी नोएडा का तो लड़का है। टोक्यो वाले दिन तो सिल्वर आया उसका। हाँ मरियप्पन का। हाँ ओके।
स्टार बनने वाला 5:30 बजे करीब कॉफी बनवा लेंगे उस पे पूछ लूंगा एक बार कर अपना काम। मेंस हाई जंप T63 के एक्साइटमेंट का स्वागत करने के लिए तैयार है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली, भारत। पूरे भारत की निगाहें, पूरी दुनिया की निगाहें इन खेलों पर लगी हुई हैं। खेलो इंडिया की खासियत यही। And soon the list will be released, and it includes a 2016 Rio Paralympics gold medalist Mariappan, who won a silver in 2020 Tokyo, and Varun Kumar Bhati, a boy from Noida, adjacent to Delhi in the NCR region, who won a bronze in 2016 and making a comeback now. बिहार से शैलेश कुमार नजर आएंगे, पहला खिलाड़ी आज के इन मुकाबलों में बिहार से, और शरद कुमार दिल्ली से। ये देखिए हाई जंप का अपना प्रयास, हल्का सा कंसंट्रेशन थोड़ी सी लूज हुई। कर्नाटका के महेंद्र, जी हाँ बिल्कुल तैयार, एकदम जाएंगे प्रयास के लिए। And in the same event, we are going to see, as Rupinder mentioned, Varun Singh Bhati, Arjun Awardee, and Mariappan. जो यह बार लगाई जाती है, इतनी ऊंचाई से आपको जंप लेना होता है, और यहाँ इस प्रयास में अपना पहला देखिए अप्रोच सही, लेकिन थोड़ी सी एनर्जी वो कन्वर्ट नहीं हो पाई और ये बार से टकरा बैठे, अपनी बॉडी का कांटेक्ट हुआ और ये प्रयास इनका अटेम्प्ट फेल हो गया। And what are the chances of someone jumping, through a pole by just the power of one leg? And that's what para games are all about. You see the grit, you see the strength in that one leg, and that's very encouraging. And you are going to see exactly the same thing in Mariappan as well. He has a disability in one of his legs, but still Arjuna Awardee, Major Dhyanchand Khel Ratna Awardee, Padma Shri Awardee. In fact, I've been fortunate enough to see him play at quite a few occasions, including the Paralympic trials which happened right at this stadium. And of course Varun Singh Bhati is there, again another Arjuna Awardee. It's a good lineup. It's an excellent lineup in this category. And definitely difficult to predict, as we don't know the recent form of Mariappan and Varun Bhati. Varun has been out of competitions at the international level. Mariappan came up with the silver at the Tokyo Paralympics after his gold at Rio. जी हाँ, एक बार और फिर तेजी से निकले हैं अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और इसके साथ यहाँ भी सफलता तो नहीं मिली है, टकरा बैठे हैं अपनी बॉडी को बार से।
लेकिन उसके बाद भी हौसला देखने वाला। देखिए बहुत बेहतरीन स्टार्ट लिया था, लेकिन जो जज नहीं कर पाए उसको लगभग सफल हो ही गए थे, लेकिन हल्का सा जो बैली के नीचे का पार्ट होता है, टी शर्ट टकराई बार से और बार गिर गई। क्लीन फिनिश ये नहीं हो पाई। Technically, not a positive attempt, but at 1.40 as well as at 1.45. But in terms of his determination, is inspiring us. He has left nothing for us to say. Wonderful enthusiasm, wonderful inspirational performance by this boy. Reduced mobility, in fact, only half. And Mariappan warming up there, you can see reduced mobility, but there is a part of that second leg which he uses effectively in his takeoff. So overall, the category is T63. For high jump, T63 comes under specifically, who have, propulsion from only one leg. So it's either the entire leg as a limb is not there, or the knee is not working. So in either these two conditions, you are eligible to play in T63 under high jump. So that's, some people get confused that Mariappan's technical category is T42. However, for high jump it's considered as T63, and that's a differentiation, because you see all the players they have been given the category of T42, but overall it's T63. Either the limb below knee or the entire limb is not there, or it has severe affectation, either limbs. And that's a good attempt. And you see that's a sprinting blade in one of the legs. And that's Rahul from Haryana. Good attempt. That's Sailesh Kumar from Bihar, whom you just saw. Players are coming in, they're taking off their jackets, do their attempt wearing the jacket again. Because right now in the field it's still cold. It's 3 p.m., 3:30 p.m. But it's still cold out there in the field. And the officials, they are adjusting the pole. I think the height is going up from 1.45 to 1.55, which we'll just confirm. And look at how they measure it, both extremes as well as the central part, so that there is no difference in the height wherever the athlete jumps over. They want to measure the sagging part of the pole as well. Exactly. So one of the specialities of
the Khelo India Para Games is again that all the entire criteria, the classification, the measurements, they are happening as per the IPC, which is something to be noted. So nothing is being taken lightly here. In fact, the World Para Athletics President, Paul Fitzgerald, is here to oversee and give a certificate to the event organized. That's Rahul again. That's a clean attempt. Yes. It's very scenic out there on the field. Some part of the track is lit by sunlight, and we have Sailesh Kumar. That was Sailesh Kumar again. That was a clean attempt. There you go with a clean jump. Cakewalk. यहाँ पर यार राम सिंह गुजरात के सक्सेसफुल ये प्रयास इनका, और अब ये हाइट को और इंक्रीज करने की तैयारी. Tremendous depth in this category. As we see, many jumpers have reached 1.65 and some of the top jumpers are still to come in. So this event is going to be very, very interesting. जैसे ही एक अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हाइट को बढ़ा दिया जाता है, टफनेस बढ़ जाती है, तो रोमांच भी बढ़ जाता है. और वही दोनों ही जो सिरे हैं पोल के, दोनों पोल वहीं पर बिल्कुल इक्वल उसको रखा जाता है. इस मुकाबले में पंडियार राम सिंह गुजरात के, राहुल हरियाणा के, महेंद्र कर्नाटक, मरियप्पन तमिलनाडु, वरुण सिंह भाटी उत्तर प्रदेश, नोएडा शैलेश कुमार बिहार और दिल्ली के शरद कुमार, इनके बीच में कड़ी टक्कर. खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 हाई जंप के ये मुकाबले. Mariappan has already achieved 1.89 mark. And that's Varun Singh Bhati. An elite level athlete from UP. Just waiting for his turn. He wants certain amount of challenge before he can make a valid attempt, Varun Bhati. And that's the significant mark of the elite players, right? जी हाँ, ये हरियाणा के राहुल बहुत बढ़िया तरीके से जंप को इनिशिएट किया और क्लीन. और अब ये वरुण सिंह भाटी उत्तर प्रदेश नोएडा के स्टार खिलाड़ी. Paralympics 2016 bronze medalist making a comeback. Varun Bhati looking in impressive form. First attempt at around 1.65 meters, and let's see how much further he will go. 28 साल के ग्रेटर नोएडा से आते हैं. Currently trains in Bangalore Sports Authority of India, coached by Shri Satyanarayan.
T42 disability. जी हाँ, गुजरात के पढ़ियार राम सिंह, सक्सेसफुल अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया तरीके से निकले, इनिशिएट किया, पावर का सही इस्तेमाल करते हुए सक्सेसफुल अपनी जो लचीलापन है बॉडी का उसका बेहतरीन बेजोड़ प्रदर्शन यहां करते हुए गुजरात के पढ़ियार राम सिंह। Absolutely. In fact, if we see the height at which he crossed, one can make out that it was approximately 10 to 15 centimeters more that he could go with this jump itself. Wonderful attempt. जी हाँ, निश्चित तौर पर एक बड़े खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो मंजिल पर तो पहुंचता ही है, साथ ही कुछ फासला वो समय से पहले तय करता है। अगर निश्चित तौर पर 15 या 20 सेंटीमीटर ये बार अप होती तो भी ये प्रयास इनका बिल्कुल सफल कहा जाता, और लग नहीं रहा है ऐसा कि इस मुकाबले में रोमांच की कोई कमी है। हाई जंप के लिए जो एलिमेंट चाहिए वो सब यहां देखने को मिल रहे हैं। कड़ी टक्कर, 7 प्रतिभागी। जी हां, बिहार के शैलेश कुमार, शरद कुमार दिल्ली के, पढ़ियार राम सिंह गुजरात के, राहुल हरियाणा के, कर्नाटक के महेंद्र और स्टार खिलाड़ी मरियप्पन टी तमिलनाडु और वरुण सिंह भाटी उत्तर प्रदेश। And the enthusiasm is so much that even the officials have to exert themselves in this event. He's coming back after 3 or 4 jumpers have clearing the jump, all in their first attempts. No one has gone to a second and third attempt except the first boy who could not clear it. We have been seeing clean high jumping as of yet. Great depth in this competition, and it'll be great to see the finish of it. And that's what we talked about. The elite players, they put in their attempt only after a certain mark which they have already achieved. And talking about Varun Bhati, of course Mariyappan is not there, but Varun Singh Bhati, an elite player, 1.6 1.8 in fact 1.82 he achieved back in 2016, but he's now here again, to test himself, to test the other competition that he has got. That's going to be a fair attempt today before the 2024 Paris. And unsuccessful attempt. Rahul. So at this height, the challenge is beginning. Rahul has felt it, first one for a long time, to have not been able to clear it in his first attempt. He's got 2 attempts more. जी हाँ, अगले राउंड में पहुंचने के लिए आपको 3 अटेम्प्ट में से 1 सफल करना होता है, और ये पहले ही प्रयास में भाटी, वरुण सिंह भाटी, उत्तर प्रदेश, नोएडा के ये खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ी है। पहले ही प्रयास में देखिए, ये चुनौती बड़ी थी हाइट की, लेकिन वरुण भाटी के लिए जैसे बच्चों का खेल, शानदार प्रदर्शन। अगर पोल के नीचे इन पैरेलल कैमरा होता तो और मजा आता। जी हाँ, बिल्कुल। और हौसलों की उड़ान जैसे इन पैरा गेम्स के लिए कहा जा रहा है, तो हौसलों की उड़ान, ये एक तरीके से जो हाइट थी उसको बोना साबित किया राम सिंह ने। और अब बिहार के शैलेश बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया ये फिनिश कही जाएगी।
कोई बाधा नहीं, कोई चुनौती नहीं। जी हां, तैयारी हमारी ऐसी है और ये निश्चित तौर पर 2 से मतलब 20 सेंटीमीटर लगभग पोल से ऊपर से इन्होंने इसको कंप्लीट किया है रुपिंदर। Absolutely. We can't give you the exact, but it looked in that region of 15 to 20 centimeters. So wonderful high jumping here on display in the T63 section. We've got Shailesh from Bihar. We've got Varun Bhati clearing in the first attempt. And here is Ram Singh from Gujarat. और And- इन्होंने भी निश्चित तौर पर जो लाइन लेंथ पकड़ी है, जी हाँ, वरुण भाटी आप स्टार हैं, लेकिन हमारे अंदर भी वो सब दमखम है स्टार बनने का, वही दिखाते हुए राम सिंह पंडियार गुजरात के बहुत बढ़िया अपने बॉडी के लचीलेपन का इस्तेमाल करते हुए एकदम जैसे सांप लहराता है, बहुत बढ़िया तरीके से निपटते हुए इस चुनौती से। और इस बार ये हरियाणा के राहुल, रुपिंदर क्या शर्त लगेगी? It's very difficult to say. All the three who have crossed it, Ram Singh of Gujarat, Varun Bhati of Greater Noida, and Shailesh, all three seems to be brilliantly jumping 10, 15 centimeters about the current height. And we have seen it. We have been talking about it since morning. It's not the public opinion. It's not about the favorite. It's about who can perform right now at this event in Jawaharlal Nehru Stadium. And it looks like that Varun has got some really tough competition in this lineup. Absolutely. I'm very, very pleasantly surprised with this kind of competition at this first Khelo India Para Games. Imagine how it will improve over the years. This is tremendous. Varun Bhati used to be an easy winner at the National Athletics Championships of the Para. But here today, he's found competition. And this is because of the inspiration of all the games that have been organized by the Ministry of Sports. And now one for the Para begins also. जी हाँ, हरियाणा के राहुल ताली बजाकर अपना ही मोरल अप करते हुए, अगर जीत की भावना हो, जीत का जज्बा हो तो, और ये इस बार टच जरूर हुए थे लेकिन सफल ये जंप कही जाएगी रुपिंदर। Absolutely wonderful. 2 attempts उसके फेल हुए थे, उसके बावजूद ये हौसला दिखाते हुए टच करा पर बार गिरा नहीं और ये सक्सेसफुल जंप माना जाएगा। तो अब बड़े हुए हाइट पे हमारे पास 4 प्रतिद्वंदी हैं जो इक्वली केपेबल है इस इवेंट में मेडल्स जीतने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आसमानों की ऊंचाई नापनी है तो आपको बाज की शक्ति अपने जज्बों में लेके आनी होगी, और बहुत ही शानदार तरीके से अब ये हाइट बढ़ती हुई और अब ये चुनौती आसान तो कम से कम नहीं रहने वाली है। तो रुपिंदर, आपको क्या लगता है अभी इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक इसका कंपटीशन, the quality, and this is the quality of the competition that we have to see in at such a level, otherwise there's no fun, right? Judging from the queue, I think it's about 1.75 right now, and I hope they go up to 1.90 and make it satisfactory of the levels that they have been achieving at the Asian and the Paralympic levels. So we know that Mariappan is not here, but hypothetically speaking, had Mariappan been here, do you think it would have toughened the competition? Because I guess he would have gone at least till 1.80, till that level where he won that silver and the gold. We know that he has got that in him, but what do you think? That's a hypothetical guess game. Depending on his fitness, like we say, we'll judge them on their fitness today, and this is what the competition is for. Either he was too tired after his Asian Games effort, or he's taken a short holiday. But the 4 competing here are showing a magnificent, and I hope they come up to at least 1.90, which will be very, very encouraging.
and Mariappan will have to think twice on his comeback. And we see the players, they are encouraging, and you can see in the stands the supporters of the players, they are encouraging them to go up and up, and you see now we have, oh, that's a that's a that's a disappointment for Rahul. And now it's an attempt, it's an opportunity for Varun to show who is the king. But don't count out Rahul. Remember, the last height he achieved was on his third attempt. So he's got two more attempts, while the others, of course, looking more proficient on their earlier performances, clearing all in their first attempt. Yes, and again, let me draw your attention to the stands there, where we have Rahul supporters sitting, and he's kind of taking cue. Maybe his coach is sitting there. जी हाँ, इस चुनौती से भी पार पाया है वरुण सिंह भाटी ने बहुत ही आसानी से अपने पहले ही प्रयास में, और यही एक विजेता की पहचान। बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, बिल्कुल आसानी से, बिना किसी प्रयास के, बिल्कुल कूल रहते हुए, जैसे कोई चुनौती हो ही ना, बहुत आसानी से। And he knows that he has got it. His gesture and body language and his confidence, and he has already won. He's already worn his jacket and he's walking towards the stands as if it's game over for him. Shailesh Kumar, he's been very impressive too. Let's see how he responds. This one has gone down. Challenge is improving. Varun is the only one to have cleared in his first attempt. Shailesh and Rahul have failed, but they've got two more attempts. जी हाँ, पहले प्रयास से ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ रिजल्ट में अंतर होगा, क्योंकि दूसरा है, तीसरा है। एक भी प्रयास अगर आप अपना सफल करते हैं, एक अटेम्प्ट आप सफल करते हैं, तो अगले राउंड के लिए आपको मौका, आपके जो संभावना है वो बनी रहती है। इस मुकाबले में बने रहने के लिए 3 में से एक प्रयास बस आपको सही करना है, और अब कोशिश यही रहेगी कि इस पहले के बाद दूसरे या तीसरे में कम से कम। And now Ram Singh of Gujarat. 2 have failed to clear this height. Varun Bharti has gone clear, currently lying first. Ram Singh to respond. And what a magnificent jump, but unlucky that a mere touch made it fall down. But to me it looks encouraging. He should do this one. And this is where I think the players need to be extremely cautious of not to overexert, but to maintain a balance, because we know that even a slight misbalance at this point in time can actually impact their career, and you never know, because the body is warm right now. They wouldn't even know right now. And his coach would have noticed takeoff was slightly ahead, so he had a longer distance to cover, and of course the height to tackle. So his coach in the stands will tell him, go clearer, go closer to this one before you attempt, and I'm sure Ram Singh will clear this height. राहुल हरियाणा के अपने इस प्रयास में देखेंगे कि क्या जो चूक पहले हुई थी, जी नहीं, रिजल्ट अभी भी वही है, बदला नहीं। लगता था तस्वीर बदलेगी इस अटेम्प्ट में, लेकिन यहाँ ये हाइट लगता है राहुल के लिए फिलहाल थोड़ी सी डिफिकल्टी वाली सिचुएशन। Rupinder, in your opinion, we know that once failed and twice failed. To what extent, in your opinion as a coach, should an athlete go? That's a risky affair, you know that. Definitely he would like to clear it in his first attempt, but Rahul has shown the determination, coming back in that previous attempt and doing it on the third. Hats off to him. And we are hoping Shailesh in a second will go over this one. Shailesh and Ram Singh were very close misses. Let's see how they perform. Second jump, Shailesh. जी हाँ, ये लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। जिस तरीके से अपने पहले प्रयास में वरुण सिंह भाटी ने इस हाइट को क्लियर किया था, कोई भी खिलाड़ी अब तक
इस चुनौती से पार नहीं पा पाया है। प्रयास दूसरा था ये, कोशिश बहुत बढ़िया थी, लहर भी थी, इनिशिएट भी किया था एनर्जी को, लेकिन जो पोल से निश्चित दूरी बना के आपको कंप्लीट करना होता है वो जंप नहीं था। वरुण सिंह भाटी तो जैकेट पहन के वो चले गए हैं. He is now relaxing. He knows that whatever may be the outcome. इस खिलाड़ी ने खासा प्रभावित किया है। बढ़िया राम सिंह गुजरात के, ऐसा लगा था कि शायद पार पा जाएंगे, लेकिन रिजल्ट अभी भी कहानी बदली नहीं है। इस हाइट को अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक पूरा करने वाला बस एक ही खिलाड़ी अभी तक, वरुण सिंह भाटी, और बाकी दूसरे खिलाड़ी अपने पहले और दूसरे प्रयास में इस चुनौती से पार नहीं पा पाए हैं। एक बार लगा था ऐसा सफलतापूर्वक कि करेंगे। देखिए ये वो जंप था राहुल का जो उन्होंने तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर किया था। The difference, I think, is the confidence that Bhati has, having had international exposure. These young athletes, the para games are for them, to give them the confidence so that they get better in the future. जी हाँ, ये राहुल अपने तीसरे प्रयास के लिए गए थे, हरियाणा के। और ये तीसरा प्रयास भी अब इस हाइट पर, ये फ्लॉप बिल्कुल ये क्लियर नहीं हो पाया है, बार से टकरा गए हैं राहुल हरियाणा के, तो ये हाइट जो है इससे ये पार नहीं पा पाए हैं। ये जंप, इनके तीनों प्रयास इस हाइट पर फेल, रुपिंदर। Absolutely. Of the 4 competitors, only Varun Bhati got a clean sheet in his first attempt. The others are into their second and third. Rahul has failed all 3, so he's out of the competition. Shailesh and Ram Singh of Gujarat have 1 chance each left. And he's jumping and he is exerting his body to to back him up in this attempt. He wants to do it, but whether his body is conditioning it allows or not, let's see. 1 attempt each left, and you see that the officials they are checking the height of the pole again, and there you have Varun Singh Bhati coming in again. He wants to come at the right time, preserve his energy, not overdo it, keeping himself warm. And okay, the officials are, I think it's more than, it's about 6.5, I think 1.83 something. And what seems to have happened is Shailesh and Ram Singh have passed their third attempt, and they will attempt as a final jump on this increased height. They've taken that chance as Varun Bhati goes and drops this one. So if either of Shailesh or Ram Singh clear this height and Varun Bhati fails, they will be above Varun Bhati in the final placing. Yes, and look at the turn of events. And that's what we have been talking about. It's about how you perform today at this event. And Varun Singh Bhati came after some rest, and he would be expecting to win this, but there's we have a few more attempts. This is called the strategy and the tactics, just like you may have seen with Mirabai Chanu, the choice of weights that you take in attempt 1, 2 and 3. Similarly in high jump, tremendous thinking from Ram Singh and Shailesh, who must have exerted in their first 2, and they said, let's preserve ourselves, let's see what Yogesh can do, and then we will respond. And Shailesh Kumar, that was his last attempt. Not happy. He was really exerting his body, really pushing his hamstrings and calves. And there you go. Every inch of the muscle in this body is exerted. And you see Rahul now taking an extra, Ram Singh taking an extra run up. He wants to do it. Oh! Lost his confidence,
used his hand and couldn't achieve this height. So Bhati is left as the clear winner, but the height that will be credited to him depends. He's got 2 more attempts at this height. And Ram Singh took an extra run up, thinking that it could probably give him that extra pace and extra that cushion for his last attempt. And now Varun Singh Bhati measurement. What happens is, in a failed attempt, like we saw with Ram Singh, pushing the bar down, sometimes the officials get the feeling maybe at the middle of the portion there may be a dip, so they remeasure to reconfirm. And we have been saying this, that the technical conduct of this game is managed by highly qualified technical officers, TOs, who want to ensure that the players, it's uncompromisable. The players are not going to get any leeway anywhere, and that's Varun Singh Bhati. Oh, disappointed there. We also were expecting a lot from him, but he's come up with good performances up till now, and now this height is where he's being challenged. वरुण सिंह भाटी एक बार फिर तैयार। खासा प्रभावित किया है इस खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से अब तक। तैयार अटेम्प्ट के लिए बढ़ी हुई हाइट पर। पहले प्रयास में असफल रहे थे, ये दूसरे के लिए गए हैं। क्या इस बार ये अटेम्प्ट में वैसे विनर है, बट ये अटेम्प्ट भी नहीं सही है, ये क्लियर है। लगा है भाई, वो देख रहा है तो अटेम्प्ट तो क्लियर है गुरु। अच्छा गिरना, ओके। ये देखिए शानदार प्रदर्शन। ऑन द लाइन राइट होता है। मैंने देखा you just passed by, मैं commentary कर रहा हूँ ना बॉक्स में, लाइट जला रहा हूँ, you Paul and the other guy passed by, but कल इनको साथ में भी लेके जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस क्लब। मेंस 100 मीटर रन T12। लाल प्रसाद ओडिशा के लेन नंबर 1 में, लेन नंबर 3 में है सुजीत एमएस दिल्ली के, और शुभम अरू महाराष्ट्र के लेन नंबर 5 में, लेन नंबर 7 में विष्णु कांत उत्तर प्रदेश के। ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से लेन नंबर 3 में, जी हां, सुजीत एमएस ने बहुत बढ़िया यहां फिनिश किया है, बहुत ही शानदार। 11.81 सेकंड में दिल्ली के सुजीत एमएस ने इस रेस को जीत लिया है। महाराष्ट्र के शुभम 12.01 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर, और उत्तर प्रदेश के विष्णुकांत तीसरे स्थान पर 12.50 सेकंड के साथ, और लाल प्रसाद सौर ओडिशा के चौथे स्थान पर रहे हैं 12.78 सेकंड के साथ। मेंस 100 मीटर रन T12 कैटेगरी।
देखिए शानदार, बहुत बढ़िया लेन नंबर 3 में और लेन नंबर 5 में पहला और दूसरा स्थान। पूरी ताकत अपनी लगा दी थी। लेन नंबर 3 सुजीत MS दिल्ली। बहुत बढ़िया। T12 की और अब ये विमेंस रेस की तैयारी। विमेंस 100 मीटर रन T11 एंड T12 शेरदा मुस्कान दिल्ली की हैं और सिमरन वत्स उत्तर प्रदेश की। लेन नंबर 1 में शिरदा मुस्कान दिल्ली की, लेन नंबर 3 में है उत्तर प्रदेश की सिमरन वत्स, लेन नंबर 5 में है तेजल देमौर गुजरात की और लेन नंबर 7 में साक्षी ई काले गोवा की। Simran is a double gold medalist from the recent Asian Games, winning her 100 and 200 silvers at Hangzhou only recently. सिमरन वत्स बहुत ही पॉपुलर नाम, और ख़ासतौर से इसलिए भी क्योंकि मैं बहुत क्लोजली उनको, उनके हस्बैंड को जानता हूँ, फॉलो करता हूँ। उनके हस्बैंड भी आर्मी मैन गजेंद्र बहुत ही उनको सपोर्ट करते हैं। इफ़ यू फॉलो हर यू विल सी। और देखिए वहाँ पे अभी प्रैक्टिस भी कर रही हैं वो स्प्रिंटिंग की। और अगेन टी कैटेगरी है, T11 कैटेगरी है, सो डेफिनेटली विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बट होनहार प्लेयर। Definitely. Tremendous inspiration and the coordination with the escort runner. Gajinder has taken very good care. The runner escort with him is also equally well trained by Gajendra. So there's tremendous coordination between Simran and the escort runner, which makes her one of the prominent athletes who could get a first track gold for India at the Paralympics. सिद्रा मुस्कान दिल्ली लेन नंबर 1 में, लेन नंबर 3 में सिमरन वत्स उत्तर प्रदेश की, तेजल दामोर गुजरात की लेन नंबर 5 में और लेन नंबर 7 में साक्षी काले गोवा की। सिमरन से I met her when she was preparing for the trials at Jawaharlal Nehru Stadium here a couple of years back, and later on as well. And the amount of training and the rigor goes, that's at a different level altogether. और And इसी के साथ here we तेजी are. से आगे बढ़ते हुए, जी हाँ, लेन नंबर 2-3 में सिमरन वत्स उत्तर प्रदेश की और देखिए उसके साथ साथ बहुत बढ़िया तरीके से लेन नंबर 3 में कंपीट किया है ये सिमरन वत्स उत्तर प्रदेश की। बहुत बढ़िया, क्या फिनिश, शानदार। अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस सिमरन वत्स की, नो डाउट शी इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। 12.74. Tremendous effort by Simran here. Seeing her run after the Asian Games, she has not let down her standard, and this has been a tremendous run. जी हाँ, The second girl, if you notice at the results, Tejal Damor of Gujarat is more than 1 second behind her, which is a huge difference in 100 meters. Normally, as we saw in the earlier races, it was 17.32, 17.33, 12.01, 12.02. In fact, one race, photo finish could not differentiate. They ran them again. But Simran leaves no doubt, no problems for the organizers, and runs away with a first gold at the
women's 100-meter run T11 and T12 at the first Khelo India Para Games here at the Nehru Stadium. And I just messaged her. जी हाँ, अब ये अगली रेस की तैयारी. So now we have now we are getting prepared for long jump T37, T38 men's. जैसे जैसे शाम हो रही है, the acceleration of the competition, the engagement level of the participant and the audience here is getting going to a different level altogether. And we see that's a long jump. Naresh Kumar from Haryana. Men's long jump T37 and T38 final. Naresh Kumar 294, we just saw jumping here, is a replay. A little bit bothered in his run up, thought he might cross the line, so went for a very conservative first jump. संदीप सिंह नरूका राजस्थान के तेजी से आगे बढ़ते हुए बहुत बढ़िया स्टार्ट लिया, लेकिन कुछ लड़खड़ाए हैं, लेकिन रेस क्लियर, बिल्कुल क्लीन ये रेस थी. अब इसकी डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा. जहां से आप जंप लेते हैं वहां से और जहां आप लैंड करते हैं वहां तक की दूरी काउंट होती है लॉन्ग जंप में. ये देखिए, यहां से पता चलेगा. जैसे ही यहाँ ये जो लाइन है, यहाँ से आपने जंप लिया है और यहाँ लैंड किया है, यहाँ इसको मेजर किया जाएगा. अपने चौथे प्रयास में 4.14 मीटर की दूरी तय की है संदीप सिंह ने. पहले अटेम्प्ट में इन्होंने 4.45. And this is T37 for the viewers. 271, Deepak Kumar from Haryana. So I was explaining T37 in long jump. It's either both the one side, either left or either right hand or leg, or partially the entire left side body. Half of the body is affected. They have moderately affected down one side, as it is called. .28 मीटर की दूरी. और अब ये मुकेश हरियाणा के अपनी चुनौती पेश करते हुए पैरा गेम्स 2023 खेलो इंडिया के इस मुकाबले में मुकेश हरियाणा. Mukesh trains here at the Nehru Stadium with Amardeep Singh, his coach, and fairly talented boy. Trains very hard, but a long way still to go as we see him. स्टार्ट लिया जंप, लेकिन शायद बिल्कुल क्लियर, जी हाँ, क्लीन लॉन्ग जंप इसे करार दिया गया है. लेकिन जो तेजी आवश्यकता थी वो शायद दिखा नहीं पाए, लेकिन अभी प्रयास और भी हैं. कुछ खिलाड़ी होते हैं अपना पहला जो प्रयास होता है उसको एज ए वार्म अप ले लेते हैं, और ये बहुत बढ़िया तरीके से ये चौथा अटेम्प्ट इनका 4.31 मीटर. उससे पहले पहला ही जो प्रयास था वो था 4.56 मीटर का. And being scolded by the accompanying coach and and probably one of his friends. And there you see from Gujarat, that's Thakur Ram Singh.
Rupinder, what's your view on the split between the northern states and the southern states in terms of the jumping event versus the throwing event? Well, normally it's the north dominating the throws, and it's the south dominating the sprints and the jumps. So, like we have Ansi Sojan, who won a silver medal at the recent Asian Games, Anju Bobby George before that, and more or less. But you have exceptions. Anju Bobby George has discovered a Shaili Singh in Uttar Pradesh, who looks like she is going to break Anju Bobby George's record. She's being trained by Anju Bobby George in Bangalore. And that's a good attempt by 224 bib number. That's Rakesh Bhai Bhatt. And we have seen that normally it's the first and the second attempt where the players are performing well. So in the previous case we saw the second attempt 2.93 and it's now 265. Arun Sharma from Haryana. As we can see from the board, it's now the final attempt, the sixth round of jumps for these jumpers. जी हाँ, 6 प्रयास आपको करने होते हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट होता है वो डिसाइड करता है आपके मेडल का रंग। और अभी छठे प्रयास के लिए तैयार अरुण शर्मा। The ground is, the jumping pit is being recalibrated. It's being leveled. And very soon we will have the players making an attempt again. अब कोई हीट नहीं होगी, रन खत्म। इसमें तो नहीं लिखा है ही नहीं। फाइनल भी नहीं लिखा वैसे तो। ना ये हीट इसमें तेजुल का 1376, साक्षी का 1580, क्योंकि इसमें हीट है इसलिए पहले के 3 ही स्कोर्स हैं। नहीं, फोर्थ वाली डिस्क्वालीफाइड हुई है। डीक्यू लिखा है, उधर लिखा है। कैसे डीक्यू मतलब डिस्क्वालीफाइड। कैसे मतलब पहले भाग गई थी क्या? पता नहीं, लेन कट। अच्छा, पहले भाग गई थी तो हाँ, लेन में दूसरे में गुजरते डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आदित्य राज गौतम बिहार के।
नेपेतुले सधे हुए कदमों से धीमा प्रयास इसे कहा जाएगा, शायद फाउल का डर कहा जाए या कुछ भी। जी बिल्कुल, 5 मीटर से भी कम, 4 मीटर के आसपास लगभग ये छठा प्रयास आदित्य राज गौतम बिहार के। संदीप सिंह नरूका, राजस्थान। जी हाँ, संदीप सिंह नरूका, राजस्थान का ये खिलाड़ी अपने छठे प्रयास के साथ नरेश कुमार हरियाणा के। जी हाँ, कोशिश अच्छी है, सफलता कितनी मिलेगी ये तो तभी पता चलेगा जब इसको नाप लिया जाएगा। वैसे रेस क्लीन है, देखिए बिल्कुल उस पॉइंट पर रखेंगे जो सबसे नजदीक होता है। जय दीपक कुमार हरियाणा के। राकेश भाई भट्ट 271 दीपक कुमार हरियाणा के। बहुत बढ़िया, ये छठा प्रयास इसको क्लीन दिया गया है और इसी के साथ मात्र 2 या 3 प्रयास और बचे हैं और फिर रिजल्ट की बारी। लॉन्ग जंप T37 और T38 कैटेगरी में लॉन्ग जंप का ये मुकाबला जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है। आज से एथलेटिक्स के ये मुकाबले शुरू हो गए हैं और कल परसों लगातार 3 दिनों तक ये एक्शन कंटिन्यू रहेगा डीडी स्पोर्ट्स पर। ठाकुर रामचंद गुजरात के और इसके बाद मेंस 200 मीटर का रोमांच भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। ये तेजी से निकले हैं, देखना होगा क्या कुछ कमाल करेंगे। लगभग 4.5 मीटर के आसपास की ये दूरी इन्होंने तय की है। बहुत ही बढ़िया। जो लोग जिंदगी में हिम्मत हार जाते हैं उनको खेल से जुड़ना चाहिए। खेल हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, हमें जीना सिखाता है, जीतना सिखाता है और वही है प्रयास ठाकुर राम सिंह गुजरात के। बढ़िया प्रयास। वन 100 मीटर के बाद अब डबल मजा 200 मीटर रन T37 नवदीप हरियाणा के, धवन दिल्ली के, सुरेंद्र राजस्थान के, आयुष्मान पात तेलंगाना के, मुकेश हरियाणा के, श्रेयास्त्री उत्तर प्रदेश के, कुलदीप सिंह हरियाणा के, रमन शर्मा हरियाणा के। देखिए बहुत तेजी से लेन नंबर 7 में, जी हां, श्रेयस उत्तर प्रदेश के फिनिश किया है। इससे पहले भी श्रेयस हमने देखा था 100 मीटर में। Shreyansh was beaten and surprised in the 100 meter by Rakesh from Gujarat, now getting his gold medal and very happy for that.
Shreyansh had won a medal for India at the Asian Games. We saw earlier this morning he was upset by Rakesh in the 100 meters. The event was so close in their finish, they had to rerun it, and the rerun was also won by Rakesh. Shreyansh finished second in this one, now getting finally his gold after having run 3 races. श्रेयांश उत्तर प्रदेश के 25.13 सेकंड के साथ पहला स्थान इस खिलाड़ी ने हासिल किया है। उससे पहले वो जो 100 मीटर की कसक रही होगी उसे निश्चित तौर पर वो मिटा पाएंगे। जी हां, ऐसा लगा था एक बार उसमें भी कि पहला स्थान हासिल किया है, लेकिन बाद में दोबारा रेस की गई और तब दूसरे स्थान पर ही संतोष करना पड़ा था श्रेयांश को। यहां पर नवदीप हरियाणा के 26.00 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर और दिल्ली के धवन 26.10 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर। लेन नंबर 7 में थे श्रेयांश, लेन नंबर 1 में नवदीप हरियाणा के और लेन नंबर 2 में धवन दिल्ली के। कई प्लेयर्स तो आज मेडल लेके ही जाएंगे यहाँ से, खाली हाथ नहीं जाएंगे. Don't have to give up. I think that's the attitude, right? Some players, we have seen, participating twice, thrice, getting into it till the time, they get a medal. Great effort by Shreyansh. He said, आज तो गोल्ड चाहिए ही चाहिए. राकेश ने 100 में हराया तो क्या 200 में खड़ा हो रहा हूँ. और वो फाइनली गोल्ड प्राप्त किया श्रेयांश ने. और उनके कोच फॉर्मर 100 मीटर एबल बॉडीड नेशनल चैंपियन अमित खन्ना, once the record holder, also trains Deepa Malik's daughter Devika Malik, who we saw winning in the T37 338 women's 100 meters earlier this morning. जी हाँ, और अब अगला मुकाबला मेंस 200 मीटर फ्रंट T64 का लेन नंबर 3 में आपको नजर आएंगे प्रणव प्रशा महाराष्ट्र के, साहिल कुमार हिमाचल प्रदेश के लेन नंबर 5 में होंगे, अशरफ रजा तेलंगाना के लेन नंबर 4 में साहिल कुमार हिमाचल प्रदेश के आपको नजर आएंगे, और लेन नंबर 6 में कलाई सेल्वम तमिलनाडु के, लेन नंबर 7 में अजय कुमार हिमाचल प्रदेश के, और लेन नंबर 8 में राजेश कुमार तमिलनाडु के. तमिलनाडु 2 खिलाड़ियों के साथ इस मुकाबले में है. बहुत ही दिलचस्प यह मुकाबला. 200 मीटर 100 मीटर का डबल मजा अगर आप कहें तो 200 मीटर में वो होता है. मेंस 200 मीटर T64 And T64 200 meter, that's about 6 participants we have got there. 2 from Tamil Nadu, 1 from Maharashtra, 1 each from Himachal, Telangana, 2 from Himachal Pradesh. And T64, that's a clear competition for blade runners, because that's got only one deficiency, which is there is no limb below knee in any of the legs, and it is specifically for athletes with the absence of one leg below the knee. They have difficulty accelerating evenly out of the blocks and maintaining an even side, particularly in the drive phase of the race. And this is that event which is typically known as the Blade Runners event. They're all setting up. लेन नंबर 3 में प्रणव प्रशा महाराष्ट्र, लेन नंबर 4 में है साहिल कुमार हिमाचल प्रदेश के, लेन नंबर 5 में है अशरफ रजा तेलंगाना के, लेन नंबर 6 में है कलाई सेल्वम तमिलनाडु के, लेन नंबर 7 में अजय कुमार हिमाचल प्रदेश के, और लेन नंबर 8 में है राजेश कुमार तमिलनाडु के. नजर बनाए रखिए, बहुत ही शानदार ये रेस होने वाली है.
कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे पहले भी जो 200 मीटर की रेस थी उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। श्रेयांश उत्तर प्रदेश के गोल्ड मेडल हासिल किया उन्होंने। और अब ये T64 कैटेगरी 200 मीटर मेंस। The field is getting prepared right in front of us on the other side of where we are in the commentary box. And we have two athletes who just crossed us. Both. So we have Rajesh from Tamil Nadu, 28.1, winning this. Clearly very exhausted. Getting the blessing from the track field. And we have Kalai Selvan, both from Tamil Nadu, peers. So the medal stays in Tamil Nadu. यहाँ कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट हुआ है, शायद खिलाड़ी सिर्फ 2 ही पहुंचे हैं फिनिश लाइन पर। What we can see on the scoreboard is the only Rajesh Kumar from Tamil Nadu, lane number 8 and lane number 6 Kalai
Is Mr. Bedi coming too? Mr. Bedi? I mean, Lata ji said that it's going to be the four of you. Lata ji, is Mr. Bedi joining us? ठीक है, done. Do you mind if I ask you the pronunciation of your surname once again? Fitzgerald. Fitzgerald, because it's always a confusion. I only know the American actor. I've been called many called things, so you can Fitzgerald. say yeah, however you like. क्या कर रहे हो तुम? I was scared. It's him coming on air with Doordarshan. चलो चलो let to begin. चलो. So I got into a fight with someone in Bali because they kept saying to all the Indians. Chalo, they only know chalo. Yeah, I'm sure. I've learned that one. Chole with bhature. Let's go. Yeah. We have cameras in all three stadiums, so जो भी अभी चल रहा है event. Rolling. खेलो इंडिया गेम्स जोर शोर से चल रहे हैं, सुबह से एक्साइटमेंट बरकरार है, एंड वी हैव सम रियली इंपॉर्टेंट पीपल हियर जॉइनिंग अस टुडे एंड टॉकिंग अबाउट हाउ दे फील अबाउट दीज गेम्स जो कि पहली बार हो रहे हैं इस लेवल पे, इस तरीके से. क्या इनका आइडिया है इन खेलों के बारे में और एथलीट्स के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल फिट्जरल्ड से, जो कि हैं हेड ऑफ द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स कमिटी. लेट्स टॉक टू हिम फर्स्ट. पॉल, thank you so much for speaking to us. First of all, how do you feel about the games, the ground, the athletes, and whatever you've seen since morning, the opening ceremony, etc.? It's an honor, first of all, to be here on the track where the magic happens for para-athletics. Really excited to see the athletes giving it their best. And what's fantastic is this platform that they're able to, the Khelo Indian Para Games, providing this platform, being on television, being on all the socials. It focuses the Indian public attention on these athletes where it should be, on the achievements that they're doing, and what that can do for society in general. Is showing what's possible, showing how much they can achieve is really amazing to see. So I encourage everyone to take a look, follow the games while they can, and really you'll be amazed. Well, absolutely. And what is your takeaway from what you've seen today? Because it's really happening for the first time at this level. We've seen a lot of para athletes doing very well worldwide, but for it to happen here at this level is really new. Sport starts somewhere, right? And for those watching at home who might see an interest in para athletics, it could be you out here one day. It could be out here competing at these games. It could be you nationally at the national championships. It could be you at the world championships and the Paralympic Games. This is an opportunity for just the ability to get onto a stage like this and compete. And the scale of which this is being done is really, really important because it gives that practice. It's not like your home track. It's not like your home field. It's bigger, and it's something that we strive to give to all of these athletes so that they can continue to do their very best. All right, well, thank you for your words on this. Gursharan ji bhi हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त. He is the General Secretary of the Paralympics Para Athletics Committee. Sir, सबसे पहले आपसे भी जानना चाहूँगी मैं कि जिस level का we heard Paul also talking about how it has taken place since morning. We've seen a lot of athletes performing really well. क्या लगता है आपको किस तरह की पहल आप इसको देख रहे हैं खेलो इंडिया जो पहली बार इस level पे हम games और athletes की excitement को भी देख रहे हैं? ये देखिए फर्स्ट टाइम ये खेलो पैरा इंडिया गेम्स हो रहे हैं दिल्ली में, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर द एथलीट्स बिकॉज इट इज़ बिग मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन टू द एथलीट्स बिकॉज देयर इज़ अ डायरेक्ट एंगेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनटू द स्पोर्ट्स, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज आवर पैरा एथलीट्स हैव बीन परफॉर्मिंग एक्सीडिंगली वेल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द पैरालंपिक गेम्स, एंड द लेटेस्ट
just concluded Asian Para Games where we had 111 medals. So we are very, very happy. Athletes are also very, very excited that such games, there is a beginning, and it's only a beginning where we have presently we have only 7 sports, but we are going to increase it maybe to further maybe 13-14 sports in the next edition. And there are only 8 top athletes are being selected for the participation. Maybe in the next we'll have more, so that more athletes should get the opportunity to participate. And we have ensured that the representation for most of the states are there in the games, and in the future we want representation from all the states, including the Union Territory, so that there is a message goes to all over India. And of course, the presence of media is very important for the popularity of the sport. Where, as you know, that the first time the broadcast of the games we had in Tokyo Paralympic Games, which was live, so there was 62 million viewers. Thereafter, we had live broadcast during the Asian Para Games, just concluded at Hangzhou. So which makes the popularity of the games to next level. So that is what we want, because we don't want only cricket to be in India, which is most popular, but we want other sports, Olympic and Paralympic sports should also be supported by the public. And we've seen a lot of participation in the past few years. Sir, बेदी जी हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी हैं पैरा एथलेटिक्स कमेटी के. सर, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, बात करिए पार्टिसिपेशन की. वीव सीन पार्टिसिपेशन फ्रॉम अंडमान ऑल्सो, एंड 32 स्टेट से अप्रॉक्सीमेटली पार्टिसिपेशन है. 1400 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करे, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर. तो आपको लगता है कि इस इवेंट से पर्टिकुलरली प्रोत्साहन में बहुत ज़्यादा इजाफा आएगा, जो हमने अभी तक देखा है? क्योंकि पैरा एथलेटिक्स पॉपुलर है, स्पोर्ट्स लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसके बारे में जानकारी अभी भी कम है. पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये जो से 32 स्टेटों का बता रहे हैं, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ये काफ़ी सालों से करा रही है. वी आर वेरी थैंक्सफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इन्होंने फर्स्ट ऑफ खेलो इंडिया को फर्स्ट टाइम इन्होंने वो किया. जहाँ तक प्लेयरों की बात है, प्लेयर तो बड़े खुश होंगे और होना भी चाहिए कि गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सम्मान किया और ये किया, और उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको भी सपोर्ट करती है और इन फ्यूचर में करेगी, और खेलो इंडिया ऑल ओवर द कंट्रीज वेरियस प्लेस में ऑर्गेनाइज करेगी. Thank you. Martin, we'd like to speak to you also. You've also been seeing a lot that is happening. And first of all, what is your take on what you've seen so far? It's happening at this level, as in Khelo India particularly is happening at this level for the first time. What do you have to say? Yeah, it's just fantastic to see so many athletes competing at such a high level after what's been a busy calendar year for para-athletics, having our World Para-Athletics World Championships in the summer, but also the Asian Games just recently passed. It's good to see such a high level event in the region to develop the athletes and also move forward into another busy year next year with the Paralympics and another World Championship for World Para-Athletics as well. So it's great to give them the opportunity to compete at a high level and keep that performance up, ready for a Paralympics. Words for the games. So well, पैरा एथलेटिक्स जो है, खेलो इंडिया जो है पर्टिकुलरली, वो इस वक्त जारी है और अगले कुछ दिनों तक ये चलता रहेगा इसी तरह कंपटीशन. और हम देखेंगे लगातार किस तरह से एक के बाद एक खिलाड़ी जो हैं अलग अलग स्टेट से अपना नाम ऊंचा करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं. वेल, बैक टू द स्टूडियो. कैटेगरी F53, F54. कृतिका जे, वनिता श्रीवल जैन, अर्चना कुमारी, कंचन लखानी, विशिखा पराशर, सुवर्णा राय और पूजा. तमिलनाडु की है कृतिका, राजस्थान की विनीता, बिहार की अर्चना, हरियाणा की कंचन लखानी, मध्य प्रदेश की विशाखा पराशर और उत्तर प्रदेश की सुवर्णा राय, हरियाणा की पूजा.
javelin throw. उत्तर प्रदेश की सुवर्णा रॉय, सुवर्णा राज। जब खिलाड़ी कॉन्फिडेंट होता है तो बॉडी लैंग्वेज उसकी बता देती है कि जी हाँ, बहुत ही सफल प्रयास कहा जाएगा, क्योंकि जो स्पीयर की नोक होती है वही ग्राउंड से टकराती है, तभी आपके, जैसे कहते हैं ना, हिट द जैकपॉट, वो तभी संभव है जब आप भाले को बिल्कुल सीधा फेंकें, यानी कि एक तरीके से वो ग्राउंड को हिट करे। जैसे आप लक्ष्य भेदने में जब तक जो पॉइंट है स्पीयर का, अगर वो हिट नहीं करेगा तो ये देखिए बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन ये निश्चित तौर पर अपने इस प्रयास से तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कही जाएंगी। कोशिश अच्छी थी, लेकिन हालांकि ये जो थ्रो है इसको क्लियर करार दिया गया है और स्माइल बता रही है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं। सुवर्णा राज उत्तर प्रदेश, अर्चना कुमारी बिहार से, सिम्पी रानी गुजरात से, कंचन लखानी हरियाणा से और पूजा भी हरियाणा से, विशाखा पराशर मध्य प्रदेश से, विनीता श्रीमल जैन राजस्थान से और कृतिका है तमिलनाडु की। और फिलहाल ये आपकी स्क्रीन पर सुवर्णा राज उत्तर प्रदेश की। आपने अटेम्प्ट लेते हुए 6 अटेम्प्ट टोटल मिलेंगे। पैरालंपिक हो, ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, 6 ही अटेम्प्ट मिलते हैं आपको। सधे हुए ये नॉक तो टकराई नहीं है स्पीयर की, और फ्लैग भी नजर नहीं आया हमें। ये देखिए वो देख रही हैं कि क्या ये वैलिड थ्रो है या नहीं। अभी भी एक बार फिर तैयार। जी हाँ, बिल्कुल। और ये अपने 6 प्रयास जो हैं वो पूरे करते हुए सुवर्णा राज उत्तर प्रदेश की। ये स्पेशल चेयर जैवलिन के लिए यहां पर अपनी बॉडी को बैलेंस कर लिया जाता है। करने के लिए ये पूरे प्रबंध किए गए हैं जिससे कि प्लेयर अपनी पूरी एनर्जी लगा पाए थ्रो करते हुए जैवलिन को। ये खूबसूरत नज़ारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का। ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबलों के लिए ये स्टेडियम प्रसिद्ध है और यहाँ फील्ड के जो मुकाबले हैं जैसे शॉट पुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो, ये बाहर स्टेडियम से बाहर जो स्पेस है इसमें यहाँ प्रबंध किया गया है। इसका बहुत बढ़िया कंटिन्यू एक्शन जारी है। हाई जंप भी हो रहा है और उसके बाद विमेंस 200 मीटर का रन T35 और T37 एक्शन अभी आप देखेंगे। बहुत कुछ बाकी है अभी। और अब ये मेंस जैवलिन थ्रो।
कौन सा इवेंट नंबर? ये सर है इवेंट नंबर 50. 50. मेरी तो 65 है ना, 50 किलो. जेवलिन थ्रो है सर? नहीं है, शॉर्ट पुट है. आगे लो, शॉर्ट पुट. शॉर्ट पुट है? ये देखो ना, अच्छा अच्छा, हाँ 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 4 किलो वाला है. 50 इवेंट 50 है. मेंस शॉर्ट पुट है 55. 400. सतासी. नरेश कुमार. ये मैन शॉटपट F55 कैटेगरी में नरेश कुमार आपकी स्क्रीन पर शॉटपट के साथ. बिब नंबर 487 नरेश कुमार, राजस्थान के ये खिलाड़ी. शॉटपट F55 कैटेगरी. और इसके अंदर ही शॉर्ट पुट के अंदर एक और बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी इसके अंदर compete करेंगे अगर वो यहाँ पर है तो टेकचंद वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं. दुबई के अंदर 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 6ठा स्थान उन्होंने लिया था. तकरीबन शॉर्ट पुट की अगर मैं बात करूं तो दिन में 200 बारी शॉर्ट पुट थ्रो करके वो प्रैक्टिस करते हैं. वीरेंद्र जी. जी हाँ, ये देखिए स्कोर. मुथुराजा 10.33 मीटर, नरेश कुमार 9.02 मीटर, मणिहास 8.81 मीटर, गोपाल सिंह 7.75 मीटर. ये अभी तक का स्कोर है. हरवीर सिंह, अनमोल वस्टा, नीरज यादव, इनका अभी प्रयास बाकी है. और खास बात ये कि ये जो शॉटपुट, ये जो लोहे का गोला है, ये इसका जो वेट है वो है 4 किलोग्राम. 4 किलोग्राम को फेंकना निश्चित तौर पर बहुत ही डिफिकल्ट रहता है. दो 2021 के जो टेक्निकली 2020 के पैरालंपिक्स है उसके अंदर टेकचंद ने भारत का प्रतिनिधित्व और फ्लैग बेरर थे वो, और ओपनिंग सेरेमनी के अंदर ही लेड इंडिया. उस टाइम एक्चुअली कोविड चल रहा था तो इसलिए मरियप्पन वॉज क्वारंटाइन फॉलोइंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन on their flight. And which is why it came down to Tekchand. Men's shot put F55. It takes a lot of time to get the chair ready. So the next athlete after the 6 throws of the previous athlete is a big time elapse. These are some of the difficulties that organizers have to face in the para events. In the meantime, we're off for the discus throw in the women's. So right now on your screen it is women's discus throw F64 category. Ravina Kanwar from Rajasthan.
It is F64 category, and now bib number 229, Dayavanti from Haryana. And these when, as you can see, it is as good as any able-bodied superficially, but there is definitely for field athletes with moderately affected movement in one or both legs or the absence of limb. So you will see that either there is some severe disability, or it's either a prosthetics or a blade, whichever is more comfortable, and asymmetric balance. So they, while throwing the discus, they try to not, and it takes a lot of courage to at least go by a couple of rounds. And you saw Dolly, bib number 155, Dolly Gola from Delhi. She did that twist. It's slightly risky, but she did it nevertheless, and a good throw. Dolly Gola also represented India at the recent Hangzhou Asian Games, so should be a favorite in this event as we see it evolve. Next up is Parminder from Haryana. She's thrown a best of 25.44 meters, so this would be a good competition. Daisy might be upset here today also. The number of yellow shirts that I've seen during this event, Rupinder, that's massive. Over 300 volunteers have participated, all wearing the same Khelo India jersey. That's very encouraging because, as you know, volunteering for this kind of an event takes a lot of coordination from all the sides, especially to track the movement of the players, their equipment, helping them out. So it's been a massive effort from the government side, and all the relevant agencies and the stakeholders involved in making this event a success. Because Rupinder, we were talking about it a couple of days back. The amount of training and sensitization to manage and interact with the persons with disabilities. The language and the word and the sensitization that you got to have, that's on a different level altogether. Luckily, the volunteers are all athletes from this stadium itself, and so it was quite convenient for the organizers to open all the athletes who come here for training, either in the excellence scheme or the pay and play scheme. Dolly Gola. Again, Rupinder, I would like to reflect on you for a technical input here for the listeners. So, especially when it comes to throwing of the event, whether that's a shot put or discus or a javelin, should it be better the higher up it goes? Is that better, or the farther in terms of its linear pace? It always depends on the length that the throw is, and from science, normally the greatest length will probably be achieved by a 45-degree angle release from the thrower. So that's why we see a lot of players, they're attempting to keep it up high up in the air as long as possible. And we are switching over to high jump. और ये हाई जंप का एक्शन अब आपकी स्क्रीन पर।
बहुत बढ़िया अटेम्प्ट करने का प्रयास था, लगा था एक बार, सफल भी हो गए हैं, लेकिन जैसे ही इस बार को आप टच करते हैं ये गिर जाती है तो इसे फाउल करार दिया जाता है और ये प्रयास इनका फेल कहा जाएगा। ये देखिए रिप्ले में बहुत शानदार तरीके से निकले थे, ऐसा लगा था क्लियर है एक तरीके से, लेकिन फाइनली जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको टच वो होने की वजह से वो बार हो गई नीचे। ये हाई जंप T64 कैटेगरी में मुकाबला चल रहा है। जी हाँ, ये है प्रवीण कुमार रघुपति तमिलनाडु के। ये देखिए रिप्ले में शानदार प्रयास और सफलतापूर्वक, जी हाँ, प्रवीण कुमार रघुपति तमिलनाडु का ये खिलाड़ी, बहुत ही शानदार। अभी वीरेंद्र इसी कैटेगरी के अंदर एक और प्रवीण कुमार है, यूपी के सिल्वर मेडलिस्ट पैरालंपिक्स 2020 टोक्यो, और वो बैठे हुए हैं पीछे, आप उनको देख सकते हैं, आराम से बैठे हुए हैं, वो अपनी जैकेट पहन के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। T64 के अंदर काफ़ी काबिल खिलाड़ी, 2.05 मीटर तक उन्होंने जंप करा हुआ है गोल्ड के लिए, और एशियन रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने दुबई में 2021 के अंदर। तो वो अपनी, मेरे ख्याल से वो भी वेट करेंगे, जैसे हमने देखा वरुण सिंह भाटी का, वो भी तभी आए थे जब उनके लेवल का पोल लगा दिया था, हाइट लगा दी थी। संयम इंजामुरी आंध्र प्रदेश के, बहुत काबिल प्रयास, शानदार बॉडी लैंग्वेज बता रही है, पॉजिटिव कितने हैं, सफल जंप इसे करार दिया गया। और अभी उसके बाद ये देखिए बहुत ही बढ़िया, एक बार फिर और ये अगला प्रयास, बिल्कुल क्लीन इसे कहा जाएगा। कर्नाटका के ये खिलाड़ी हैं, जी हाँ, रक्षित HS। अभी रिप्ले में देखिए बहुत बढ़िया तरीके से इनिशिएट किया, बॉडी के वेट को ट्रांसफर किया दूसरी साइड बार से, बिल्कुल कूल, और जो जंप है उसको देख के लग रहा है ऐसा कि 20 या 25 सेंटीमीटर अगर ये बार अप होती तो भी ये क्लियर होता। और इससे पता चलता है कि T64 की हाई जंप की इस कैटेगरी में कितना टफ मुकाबला होने वाला है। जैसा कि दीपक बता चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर कंपटीशन टफ होता है तो मज़ा भी दो गुना हो जाता है। अब देखिए ये जितने प्लेयर्स हैं, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आर फ्रॉम T44 कैटेगरी, बट अगेन बिकॉज इट इज़ हाई जंप, overall it is T64 category, because in high jump the overall category that we need to take into consideration is their limb movement, and these are 8 players. श्याम इंजामुरी, राजेश चौधरी, रक्षित HS, उनी रेणु, आर्यन चौधरी, बांती, प्रवीण कुमार रघुपति और प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के। और अब देख रहे हैं पहले चुनौती कितनी ऊंची है, और गए तेजी से, बहुत बढ़िया इनिशिएट किया है ये आंध्र। It's a clean
बहुत ही नाइसली उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी लेग का जर्क देके ही अवॉइडेड. श्याम इंजामुरी, आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया तरीके से इनिशिएट किया था, बॉडी के वेट को संभाला था, एनर्जी बचाकर रखी और सफल जंप. और अब आपके लिए स्क्रीन पर प्रवीण कुमार रघुपति, तमिलनाडु. कोशिश अच्छी थी लेकिन थोड़ा सा भांपने में लेंथ को चूके. अगर 2 या 3 सेंटीमीटर और अप होते तो निश्चित तौर पर क्लियर कर पाते इसको. थोड़ा सा समझने की भूल, लेकिन फिलहाल और अब तैयार हैं. रक्षित, लेकिन ये जंप जो है अमान्य करार दी गई है, क्योंकि अगर आप बार को गिरा देते हैं तो आप अपने प्रयास को भी वहीं ध्वस्त कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं. रेड फ्लैग अप मींस आपका ये प्रयास फेल हो चुका है. हाई जंप के ये मुकाबले, T64 कैटेगरी मेंस के ये मुकाबले. और अब प्रवीण कुमार रघुपति तमिलनाडु के पहले प्रयास में 1.60 मीटर की हाइट इन्होंने अचीव की थी और ये भी सफलतापूर्वक क्लीन जंप. Praveen Raghupati going over 1.6.5 meters in his second attempt. 1.60, he had a clear first attempt. So Praveen waiting in the wings for it to be up to 1.80 before he enters, I guess. And we seem to have some depth here. 2 boys already crossed, 2 waiting in the wings. So this seems to be a good competition brewing here. And Praveen is waiting for his turn. Last I saw him, he was tying the laces of his shoes to get ready, to get kicked into the fray. And the other players, they're taking their time, refreshing themselves, waiting for their turn. As the officials, they adjust the pole. That's Rakshit from Karnataka. So this height is proving to be tough for some of these boys. Praveen Raghupati of Tamil Nadu has been fortunate to get over in his second attempt, but Rakshit still struggling, and he's got probably a final attempt at this height. He's going again. He missed it. जी 3 प्रयास किए गए और तीनों ही यहाँ पर ये फेल रहे रक्षित के. इस हाइट पर T64 का ये मुकाबला. और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी अगर स्कोर की बात करें तो श्याम इंजामुरी 1.65 मीटर के साथ टॉप पर हैं. प्रवीण कुमार रघुपति शेयर कर रहे हैं पोजीशन 1.65 के साथ, और रक्षित 1.60 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं.
मुकाबले में अभी बहुत कुछ बाकी है। दिन ढलने को आया दीपक, लेकिन जोश अभी भी खिलाड़ियों के अंदर उतना ही। मेडल के लिए प्रयास, जी तोड़ मेहनत जो की है पिछले समय में अब तक, आज लगता है उसका जो फल है वो खाने का दिन है और कोई भी खिलाड़ी चूकना नहीं चाहेगा। देखिए क्या सफल प्रयास किया है, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट। Good height. It looked like an easy breeze. This competitor has just entered the fray at 1.65, and we saw the confidence with which he went over. And that's Injamuri of Andhra Pradesh, 124. He's also competing very strongly. Missed first attempt in this height, came back and cleared in the second. Missed in the previous height, came back and cleared in the second. So, tough competitor Injamuri is. So Virender, आपकी बात पे I'm going to come back. This is an important event, and the players, they know it, because this is the segue to the international journey, I would say. And none of the players, they are taking it lightly, because they know that this kind of an event, this kind of a lineup, the kind of mix of talent we see here, it is not going to be there in any of the state level events. So they are taking it seriously. And it's a serious height now, 1.70. Praveen Raghupati just failed to clear. We saw Injamuri come back and clear it in its second attempt. And we'll see Raghupati perhaps a final attempt. Praveen still not entered the fray. And while we are waiting for the high jumpers, there are other events also going on. There is a long jump happening. We can see it right outside from the commentary box. We can see the players competing. There are other field events which are happening. It's all going on. And so this is what I was talking about. This is long jump. हाई जंप के बाद अब जंप करते हैं लॉन्ग जंप पर. That's men's long jump T47. Vishampallu Bhaskar Rao from Andhra Pradesh. And probably some discussion going on with the officials. Okay, looks sorted now. Vishampallu Bhaskar Rao from Andhra Pradesh going for a crack. लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी. विशाम्पल्लू भास्कर राव आंध्र प्रदेश के. बहुत देखिए पूरी अपनी शक्ति को समेटा, बेहतर इस्तेमाल किया टैक्टिक्स का, टेक्निक अप्लाई की और रिजल्ट भी शानदार. 6 मीटर की जो दूरी है लगभग उसके पास पहुंचने की कामयाबी
हासिल की है वशमपल्लू भास्कर राव ने. That is, there was a good. That's an excellent attempt. 5.91, probably not seen thus far, and obviously, it's about the category as well, because this category is all about one arm, either partially or completely. Yes, so अर्जुन सिंह राजस्थान के. ये देखिए, इन्होंने भी लगभग बहुत ही शानदार तरीके से फिनिश करने में कामयाबी हासिल की. देखना होगा दूरी. जी हां, 5 से तो बहुत ज्यादा, 6 के कितने करीब ये देखना होगा. जी 6 से भी ज्यादा, 6.19. अगर So this competition really set up. First person from Andhra, 591. Response from the second jumper, 6.19. And now let's look at what 332 can do. Vikas from Haryana, also responding with a good jump. there was Vikas 6.02, bib number 332. So this is very exciting. 591, 620, 602. And this is just the first 3 jumpers. So keep watching this one. It's going to be a great competition. They've still got 4 attempts left. This is their second attempt. जी हाँ, लॉन्ग जंप T47 का ये मुकाबला चल रहा है और ये जो जंप है इसे अमान्य करार दिया है रेफरी ने. जैसे ही रेड फ्लैग अप होता है, आपका जो जंप होता है वो कैंसिल हो जाता है. आए जरूर थे 2 नवनीत खत्री. And I would like to again draw your attention to that it's T47 high jump and T47 long jump. In T47 high jump, in the morning we talked about Nishad Kumar, one of the best players India has seen, and this is again the same category but long jump. That's Karandeep Kumar from Punjab. Again a good attempt, looks above 550. So the standard really up in this one. All the jumpers getting close to 6 meters and setting up an exciting battle in the T47 long jump for men. This one I think gets a red flag, and that's why Karandeep is slapping himself. Yes, that's the plasticine ahead of the board. If the spikes touch it, it is a foul attempt. Of course, followed by the red flag, which the judge took up immediately. जी हाँ, नियम होते हैं, कायदे होते हैं खेल के और उनका पालन करना भी मस्ट होता है. जैसे ही आप चूक जाएंगे तो आपका जो प्रयास है वो भी फेल करार दिया जाएगा और यही हुआ है. पिछले 2 अटेम्प्ट में हमने देखा है. अब हैं विशमपल्लू भास्कर राव आंध्र प्रदेश के. अच्छा नहीं, या मोहम्मद अनस गुजरात. और इस जंप को भी अमान्य करार दिया गया है. And watch why it was amanya. It went over the white, which is the board where they must land behind. And once you overstep, and look at the jump, it was much above 6 meters. So very interesting prospect now. This boy seems wonderful. Mohammad Anas
from Gujarat. And he has got good height. I think he has got that potential. Had it been a valid jump, it would have been one of the best ones we have seen so far. But yeah, let's see. I think he would not commit that same mistake. That's Vishampallu Bhaskar Rao from Andhra. He's jumped 591 earlier. There's been a 591, a 602 and a 620 and a foul attempt which looked like 650. So we look forward to that very talented boy, Mohammad Anas from Gujarat, as he continues to compete here. He's got 4 attempts left. देखिए फॉर अर्जुन सिंह पहला जो इनका अटेम्प्ट था 6.19 सक्सेसफुल रहा था. Currently the leader in this event, but I suspect Mohammad Anas will give him a close fight. But right now, very interesting. First is Arjun Singh from Rajasthan, 6.19, whom we just saw do his third attempt. And there's Vikas of Haryana, second with 602, and Vasapalli Bhaskar Rao with 5.91 at third. But there'll be many more upsets, as we've seen Mohammad Anas do a foul jump which looked well above 650. जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है. खिलाड़ियों का दमखम अभी और निखर कर सामने आएगा. एक बार फिर तेजी से निकले हैं 6 के आसपास. ये भी जंप कहा जाएगा. बिल्कुल सक्सेसफुल ये जंप है. आइए देखते हैं रिप्ले में इसको. विकास हरियाणा के. छह 6.02 इनका पहला प्रयास सफल था. ये भी सफल. अब देखना होगा दूरी कितनी तय की है. What we can see from the board, this jump was 6.13 centimeters. 6 meters, 13 centimeters. So he's very close behind Arjun Singh, who did 6.19. ये भी 6 के आसपास का प्रयास था. नवनीत खत्री हरियाणा के. नंबर 298. 611 नवनीत खत्री का स्कोर. And with that jump, he jumps himself into the third position. So it's 619, 613 and 611. And Anas still to go. करणदीप कुमार पंजाब के. His earlier attempt was a foul, so he's looking forward to this one. If he gets a white flag, he gets a registration. And yes, he's quite happy. ये 5.38. He's got himself on the board. His first one was a foul attempt. So he's starting from 5.38. As of yet, out of medal contention. मोहम्मद अनस नदू थोड़ी गुजरात. जी हाँ, नजर बनाए रखिए इस खिलाड़ी पर. बिब नंबर 219 फाउल था.
पिछला प्रयास, लेकिन जो इरादे हैं, बुलंद इरादे, वो क्या तस्वीर क्रिएट करेंगे इस बार देखना होगा। हालांकि 6 मीटर से थोड़ा सा पीछे ही कहा जाएगा, तो मेडल की जो दौड़ है उसमें तो अभी शामिल नहीं हो पाएंगे। कुछ बेहतर करके दिखाना होगा। पहले प्रयास में ऐसा लगा था कि 6.5 के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन यहां 6 से कम। But because that was a foul attempt, he went conservatively to get a mark on the board, and he's got a white flag, and it's 6.04. So we've got 4 jumpers now above 6 meters, and Anas is currently lying 4th. जी हाँ, ऐसा लगा था कि 6 से थोड़ा कम है, लेकिन ये 6 से थोड़ा सा ज्यादा है। Now that Anas has got a mark on the board, I think he will go all out. And if he comes close to his potential, he looks very, very exciting. Definitely, if I'm a talent scout, he is top of the list in today's performers. करणदीप कुमार पंजाब के, ये देखना होगा क्या प्रयास सफल है। हालांकि 5 मीटर से भी पहले इनका वसंपल्लू भास्कर राव 5.91 इनका अब तक का बढ़िया स्कोर। लेकिन मेडल की दौड़ में अगर आपको बने रहना है, दावेदारी अपनी बरकरार रखनी है, तो आपको 6 का जो आंकड़ा है उसमें आना ही पड़ेगा। कम से कम 6, 12 या 13 के ऊपर आपको आना पड़ेगा, तभी आपको मेडल मिलेगा। अभी तक हमने we have not seen 6 meter getting crossed so far, so this is also getting very, very exciting. No, we've seen 6.19. Rajasthan, Arjun in the lead, 6.13. Vikas, Haryana, second, and 6.04. Anas currently lying in that third position. जी हाँ, 6.11, 6.13 and 6.19. And Anas is fourth with 6.04. So we've got 6.04, 11, 13 and 19. The 4 major contenders now set up for this long jump T47 event. अगर बात करें हरियाणा के नवनीत खत्री की, तो 6.02 के साथ वो 5वें स्थान पर बने हुए हैं रुपिंदर। और ये भी 6 के आसपास का ही प्रयास है, ये देखना होगा। अबोव है मोहम्मद अनस, स्कोर देखना दिलचस्प होगा। वैशंपलो भास्कर राव, यही वो सफल जंप जहां पर 5.91 के साथ, और अब ये 470 अर्जुन 439 करणदीप कुमार पंजाब के। He jumped 5.38 in his second after fouling his first attempt, looking to improve in this one. .85. He's improved from 5.38 in his earlier jump to 5.85, coming close to that 6 meter magic mark, which he must cross if he wants a medal. Here they are. जी हाँ, अर्जुन सिंह 6.28 मीटर, विकास 6.13 मीटर, नवनीत खत्री 6.11 मीटर और मोहम्मद अनस चौथे स्थान पर। So Mohammad Anas has a good height, but still trailing behind the top 3. Probably a training, from a training perspective, a lot of work
needs to be done. We are still at the fourth attempt, so give Arjun a chance to realize his complete potential. Definitely, after work, he can come close to 7 meters, according to me, which should make him a potential for the Paralympics. Wonderful jumping he's shown. Got a few foul attempts, but improved to 6.04. So जी हाँ, that's- मोहम्मद अनस इस बार अपनी शक्ति को समेटा है. देखना होगा क्या सफल हो पाएंगे, लेकिन अभी भी 6 से थोड़ा अप है आंकड़ा, लेकिन कितना ये देखना होगा. प्रयास भी सफल है, तो क्या मेडल की रेस में अब शामिल हुए हैं. चौथे नंबर पर फिलहाल चल रहे थे. ये देखिए, यहां से लग रहा है ऐसा कि 6 मीटर को शायद क्रॉस किया है या नहीं, देखना होगा. या 5.8 या 9. जी हाँ, 5.96. बिल्कुल 6 के पास ही पहुंच गए हैं, लेकिन 6 क्रॉस नहीं हो पाया है. So Virender, from the commentary box, it's a different picture, but we see that he did not even cross 6, which means that he's trailing behind the top 3, and obviously Arjun is topping the stack at 6.28, far away from Navneet, who is at the 3rd position, and obviously for Anas it's an unreachable rank. But let's see. The competition is going on. The officials are recalibrating the pit and the mark, the starting point. 2 jumps still left. They've completed the rounds 4, and now they will be starting with round 5. And the person who's currently lying first will jump last in this grouping, and the one who's lying 8th will jump first. So the 7th one will jump second, and so on till the top position. So in this round now, we will see Arjun Singh, the last jumper. And that's got a logical reason behind it, because obviously it's the law of conservation of energy of the players is followed here. You give the chance to people who really deserve it, and the one at the top, that player is given a rest to see if there is really a challenge. The first 3 attempts are equal for everyone. They are in the order which has been come out by lots. But after the first 3, they recalibrate. The top 8 qualify for 3 more jumps, and the order is the 8th person jumps first. And this is also to give them an advantage. The first chap deserves a chance to know. As we go on to the track now, and this is the highlights of the T11 final 100 meters. Madan, right in the center of your frame, came first in it. This is Madan. Ramanji and the other boy were very closely involved for the silver and the bronze. And these were some of the first events that we saw very early in the morning. You can see that the sun is right in the east, and the grit shown by the guides. And this was the next event, still visually impaired, but going up in terms of less severe disability. And there we go, the cheer. जी हाँ, खिलाड़ियों ने अपनी पूरी शक्ति को झोंक दिया था. सुबह सुबह हमने देखा था जोश, जज्बा, जीतने की ख्वाहिश. ये हल्का सा कुछ हैमस्ट्रिंग इंजरी भी नजर आई, लेकिन उसके बाद भी रेस में बने रहने का जो जज्बा दिखाया खिलाड़ियों ने, वो काबिल तारीफ.
बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ फिनिश किया था। ट्रैक एंड फील्ड में हमेशा ही तेजी देखने को मिलती है, पेस देखने को मिलता है, रोमांच देखने को मिलता है। ये देखिए, एक तरफा जीत हासिल की थी। ये एक्शन कंटिन्यू रहेगा आने वाले 2 दिनों में भी ट्रैक एंड फील्ड का डीडी स्पोर्ट्स पर। पैरा गेम्स में 7 खेल शामिल किए गए हैं। बैडमिंटन है, शूटिंग है, आर्चरी है, एथलेटिक्स है, पावर लिफ्टिंग है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन एथलेटिक्स। 3 दिनीय मुकाबले चलेंगे। टेबल टेनिस। और वीरेंद्र, कल का दिन भी ऐसा ही रोमांचक होगा, बिकॉज at Jawaharlal Nehru Stadium, Hangzhou bronze medalist Ashok from Haryana, the focus will be in focus along with Paramjeet. Shooting 2 also commences tomorrow, so the audience would be able to see shooting at the Karni Singh shooting range, where Manish Narwal, Singh Rajadhana, Rudransh Khandelwal, Rubina Francis, all will have their eyes set on the podium. And table tennis, which is going to start on 14th of December at the IG Stadium. We'll see Bhavina Patel from Gujarat lead the charge. क्या कर रहा है? अब ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी है, फिर बोलेगा कमेंटेटर थक गए। जयंती बेहरा जीत गई 200। अभी तो 200 से बहुत सारी चल रही हैं। इन्होंने पैकअप कर दिया क्या? दिखा नहीं रहे। हाई जंप क्या हुआ? प्रवीण का है, वो भी नहीं दिखा। लॉन्ग जंप में खो गए, लॉन्ग जंप भी फिनिश नहीं कराया। हो रहा है, सब हो रहा है, साथ साथ दिखा नहीं रहे उसको। मुझे लगा लाइट खत्म हो गई जो। हाँ, फिर से फील्ड में आ गया। देखना ये कौन सा इवेंट है? शॉर्टपुट। कौन सा शॉर्टपुट है देखिए। (219), the exciting prospect that we have been discussing. Anas from Gujarat, currently lying fourth with 6.04. This is also, it seems, in the same region. So one would say a good debut for this youngster, but a long way to go to realize his potential.
Anas has been great, currently lying fourth with 6.04. This one is 5.88. It's even lesser than his last attempt. So he's tiring, and I don't think this is a debut which will give him a medal. लॉन्ग जंप T47 कैटेगरी में ये मुकाबला चल रहा है. So that's Navneet Khatri. It's a foul. You can make out from his reaction. He's currently in the second position with 6.11. Third position, sorry. Arjun is first with 6.19. Vikas is second with 6.13. And Navneet is third with 6.11. Now that's Vikas again. It's he is currently at 6.13, 6.16 in his fourth attempt. So that's a close competition, 6.19, 6.16 and 6.11. And that was the fifth attempt. Currently in the silver medal position. Oh, that's 6.25 by Vikas. So just 0.03 behind the gold medal winner, who has a chance to respond to him now. And there we go. Well, it seems to be a legal jump, but doesn't look like 6.28. Arjun is leading with a leap of 6.28. And he's being chased down by Navneet Khatri. 6.25. That's 6.02. So Arjun consistently above 6, leading currently with 6.28, followed closely by 6.25. And they've one attempt to go. So anything can still happen. And Karandeep Kumar from Punjab. He hasn't touched the golden mark yet. And looks like that's not a legal jump. The officials explaining the foul jump, how he went over the white portion. So Karandeep again finishes this event without a medal. और अब दूधिया रोशनी से फ्लड लाइट से नहाने की तैयारी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. पहले जो सनलाइट थी बिल्कुल वैसी ही लाइट यहाँ पर देखिए, रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता हुआ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. रात और दिन का भेद यहाँ खत्म हो जाता है. मेडल सेरेमनी.
Shreyansh Trivedi. Getting his silver medal when he was defeated earlier this morning by Rakesh from Gujarat. Came back to win a gold in the 200 meters in the evening. Rakesh, the winner of the gold. T37 category 100 meters. Upset the Asian medalist Shreyansh Trivedi. So lots of talent being discovered. Rakesh here. The long jump pit we've seen Anas. In the high jump we saw some very interesting competitors competing with men's 100 meter run T37. Shreyans, Rakesh first and second. Rakesh in the middle with the gold. छठे अटेम्प्ट में ऊपर चढ़ना काफी मुश्किल है. गोवा में एक लीग था कि जैसे सुबह था 6 से लेके 10-11 बजे तक, उसके बाद फिर शाम को शुरू करते थे वो 7 बजे लेके 10 बजे. अभी तो 11 था और फिर 1 बजे से स्टार्ट हुआ ना. लेकिन 11 हम तो सुबह 7 बजे आ गए थे ना. हाँ वो तो है ही. बात वो नहीं है ना, मतलब 200 हो रहा है ये वहाँ पे जैवलिन दिखा रहा है. तो फिर हम भी 11 बजे हाइलाइट्स दिखा रहे हैं 200 हो रहा है. ये हाइलाइट्स है पुरानी वाली वही लड़की है. ये हाइलाइट्स नहीं है सर, ये तो लाइव बाहर हो रहा है विमेन जैवलिन का. लड़की तो हम भूल चुके हैं. दोहरा गई नहीं सर, ये हो रहा है. कौन सा कहानी वगैरह है इसके अंदर. कौन सा ये विमेन का है जैवलिन का. लग तो रहा है. बताओ बताओ. ये है सर F55. कौन सा नंबर. जब नंबर बताओ इसका क्या लिखा हुआ. इवेंट 108 हो रहा है. लाइव है सर. 200 इवेंट नंबर 108 हो रहा है सर. 200 नंबर है. गौरीबेन पारसोट पटेल आई, कविता कुमारी, सुचित्रा परिदा, 107 है यहाँ तक. करीना जोशी 108. 107 है यहाँ तक. फेयर. And that's women's javelin throw F55. Gauriben Parsot Patel from Gujarat. गौरीबेन पारसोत पटेल गुजरात की जैवलिन थ्रो F55 कैटेगरी.
बिल्कुल सही अप्रोच, सही टेक्निक। सो वीरेंद्र, आपके हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे, कैसा रहा आपका दिन? व्हाट्स बीन योर एक्सपीरियंस सो फार? व्हाट वर द हाइलाइट्स फॉर यू? जी दीपक, जो प्रदर्शन रहा यहाँ एथलीट्स का, निश्चित तौर पर एक सुखद एहसास मिलता है। क्या तैयारी करके आए हैं खिलाड़ी, पता चलता है प्रदर्शन से। आप जीत जाइए लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, इस जज्बे के साथ खिलाड़ी उतरे हैं मुकाबले में। चाहे वो जैवलिन थ्रो हो, शॉट पट हो, डिस्कस थ्रो हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, टफ फाइट रही है। और स्पेशली जो अट्रैक्शन रहा 100 मीटर और 200 मीटर कैटेगरी जो भी हो, लेकिन मुकाबले ऐसे रहे कि मन मोह लिया। और ये बिल्कुल दूधिया रोशनी में नहाते हुए इस समय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, खूबसूरत नज़ारा, फ्लड लाइट अपने शबाब पर। रुपिंदर, आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, बहुत सारे बडिंग प्लेयर्स वी सॉ in the course of today. What is your assessment around the future of para-athletics in India? Looks very exciting. Of course, we've seen the experienced ones like Ankur Dhama, Praveen, Nishad at the top end excelling. But we've also seen a man from Gujarat upsetting an Asian medalist in the 100 meters, beating Shreyans Trivedi earlier this morning. We've also seen Mohammad Anas with lots and lots of potential in the long jump pit, and I hope he's a Paralympic medalist for us in the future. So the list can go on. We also see Dr. Nidhi Mishra continuing to make progress with that 25-meter discus throw of hers. So there's lots and lots of prospects, and we hope the coaches are doing their jobs to nurture them to top levels. Exciting first day's event, I would say, from the athletics track at the Nehru Stadium. I think it's this is the so far 8 editions of Khelo India Games have happened, including the youth and the university games and the winter games. And this is the first edition of Para Khelo Games. And I really hope that this sets and encourages the youngsters, people in India who are typically in the traditional sports, to come forward and start participating, start picking up things like javelin, start picking up things like track events, start picking up things like long jump. And I see that as the future of athletics in India overall, and specifically in para. And it's an extremely large community of people, I would say, in India who are just waiting to turn into athletes. And certainly, this kind of an event and this kind of a mega grand launch, where we as citizens of this nation, we come together and we come to celebrate this kind of an event. So I think this sets a very, very strong precedent. जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया दिन का खेल रहा आज का। और बने रहिए हमारे साथ, ये एक्शन डीडी स्पोर्ट्स पर कंटिन्यू है।
200 दिखा पा रहे ना, वो लाइट तो अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से, कैमरा उनका काम नहीं कर रहा है ना। ये इवेंट ये लो देखो 200, सिमरन जीत रही है ना 200। हाँ वही तो कह रहा हूँ, आप दिखाएं। कमेंट्री होल्ड है सर, बंद नहीं हुआ है, गेम ओवर नहीं हुआ है। हाँ हो सकता है बाहर कुछ हो रहा होगा ना। जी सर। यहाँ का ये कह रहे हैं लास्ट इवेंट है, हो सकता है बाहर कुछ हो रहा हो। अच्छा नहीं यहाँ भी अभी लड़के हैं यार। अच्छा अच्छा। नहीं ये मतलब लिस्ट के हिसाब से लास्ट होना था। हाँ वहाँ लड़के नजर आ रहे हैं 200 के। कल का दिन कैसा था? 601 हो गया, सबका टाइम अप हो गया अब तो। अच्छा अब ये 5:55 का लास्ट इवेंट था तो ये हो गया। इसमें अभी मुझे लग रहा है 200 चल रही है, ये बाहर भी कुछ ढूंढ रहे हैं। अब इसके बाद वो है सारा सीरीज से वो है मेडल्स, आधा एक घंटा मेडल चलेगा साथ में। अच्छा तो हमें क्या बैठे रहना, लेकिन ये तो हमें बता ही नहीं रहे इवेंट क्या है। हाँ सर कैसे उदास बैठे हो? पता ही नहीं ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ। इनको कुछ नहीं पता, ये पैर आए। वो कह रहे हैं होल्ड करो। क्या सेवा करूं? एक चाय और पिलवा दोगे, पिलवा सकते हो अरे तो? मैं चाय के लिए वहाँ जा सकता हूँ, टहलने के लिए अच्छा है। मैं तो ले आओ यार फिर, एक जैसे लाए थे। बाइक को लेके हाँ किसी भाई को बोल दो। आप इधर ही हो ना? मैं रमेश बाबू को फोन किया, मैंने आगे सर म्यूट कर दो उसको प्लीज। म्यूट तो है, म्यूट नहीं है ना, आवाज़ आती है ये आवाज़ आ रही। उसने ही होल्ड पे कर रखा है। कितनी 4 या 3 मैम तो चलेगी। 3 ही भाई। 3 ही ले बिस्किट ले आ भाई तेरा भला हो। मट्ठी लिया था, मट्ठी ले आ कुछ भी ले आ भाई, ले आ बस। हेलो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट करा है हमने जो कमेंट्री करी है ना,
जिन्होंने, क्योंकि मैंने भेजे हैं लिंक इधर उधर, मतलब मेरे काफ़ी लोगों ने देखा भी है वो। कमेंट्री अच्छी हुई है इसका मतलब। नहीं, क्वालिटी हमने बढ़िया करी है सर, बाय एनी स्टैंडर्ड वी हैव डन। नाइस। नो वन कैन से दैट वी हैव बोर्ड पीपल। ये रुपिंदर सर आपके साथ हैं, ऐसा कैसे बोल दोगे यार? ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता। नहीं, वो कह रहे हैं ना एनर्जी कम हो गई है। नहीं अब हुई, अब नहीं, जो उन्होंने बोला मैंने आपको बता दिया, आपको बुरा लगा तो नहीं मैं क्या नहीं सर, देखो ऐसा होता है कि stats play a big part. If you're ready with the stats, the engagement will keep happening. यहाँ पे इधर उधर शफल करोगे, stats नहीं दोगे, हम stats भी we are actually जब कंपैरिजन है, तुम चले जा रहे हो जैवलिन में 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर यहाँ जा रहे हो, हम पन्ने ही पलटते रह गए। और आप ये भी देखिए सर, ये पन्ने तो इन्होंने दिए भी नहीं, वो तो हम ले आए। आप सोचिए दीपक भाई, कोई नहीं, ऐसी ही विकट परिस्थितियों में काम किया है जिंदगी में आकाशवाणी दूरदर्शन में हमने। तो by that standard we have done a good job. We have done an IPL level commentary. क्योंकि कुछ हो गया है, we should be satisfied. हाँ नहीं, अब मैं तो सर अपनी रग्बी की कमेंट्री सुन रहा था, मुझे अच्छी लगी। ये आप आइए, क्या कमेंट्री करनी है नहीं करनी है? अरे उसको लगा लो यार। जैवलिन आ रहा है सर, women का। क्या बिग नंबर है, क्या दिखा? और इसी के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर एथलेटिक्स का एक्शन बरकरार है। जी हाँ, यहाँ मुकाबले चल रहे हैं जैवलिन के, विमेंस जैवलिन का यह मुकाबला। So this is women's javelin. We are back in on F55, where we see representation from Gujarat: Ashaben Patel, Gauriben Parsot Patel, Kavita Kumari, Suchitra Shatabdi Avasthi, Sakshi Kasana, Shweta Sharma and Garima Joshi. We have 8 contenders. जी हाँ, आशाबेन पटेल हैं गुजरात से, गौरीबेन पार्षद पटेल भी गुजरात से, हरियाणा की कविता कुमारी, सुचित्रा परिदा ओडिशा से, राजस्थान की शताब्दी अवस्थी, उत्तर प्रदेश की साक्षी कसाना, श्वेता शर्मा भी उत्तर प्रदेश से हैं, और उत्तराखंड की गरिमा जोशी। 8 खिलाड़ियों के बीच में यह मुकाबला है, फाइनल मुकाबला है। Hello, check. F55 category, we shared in the morning that it is died down to lack of mobility in legs and trunks. That's going to be an invalid throw. If the javelin lands on its body, then it's not considered to be a valid throw. It has to, the tip of the javelin needs to land first and make a mark. दोनों ही जो प्रयास हैं अभी तक सफल इसलिए नहीं कहे जाएंगे। जी हाँ, हाइट अच्छी थी थ्रो की, लेकिन जो लैंड किया है उसके बावजूद भी वैलिड इसको करार दिया गया है थ्रो को। और इसी के साथ ये सभी प्रयास पूरे। ये बेल्ट लगाई जाती है क्योंकि जब आप
फोर्स से आगे बढ़ते हैं और अब अगले प्रयास के लिए तैयार। और F55 कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे दैट द हेल्प ऑफ द पोल which is adjacent to the chair is not there, and that's going to be a valid throw. Perfectly lands on its tip. दीपक सर आप कहाँ रहते हो? Gear up, and rightfully so, because it's a matter of safety and well-being of the player as well, as much as it's about competing in a sport. So one has to be really patient as a viewer to go through javelin throw, especially the F higher category events for both men and women. Okay, that looks like a valid event because the tip of the javelin, it touched the ground first. Yes. So 15.47 meter. Going in again. Good throw. It should keep on increasing. That's what the players expect. The numbers in terms of meters, they should keep on increasing. Suchitra has shown good form. There you see, like you said, 1547, now 1657. And am I going to make a guess 17 in the third?
hopefully. That definitely looks like a higher number than the previous two attempts. And some players choose to take the help of the rod to balance themselves. Some players, they are more comfortable in bending backwards with the help of a belt. Uh, and that's the fourth attempt, 16.56, slightly not up to the mark versus a third attempt. So looking like she's tiring. But this one again seems to be good. 1663 followed by 1656. Not too bad. Let's see what this one is. It's a fifth attempt. But Rupinder, in your view, do you think having this pole, does that make any effect? Because while it does provide that stability to the player, some players they choose to go extremely backwards, bend their spine backwards, and then sort of use their body as a propeller. Which one do you think, as a coach, is more advisable? Actually, it depends on the individual. I think the pole should always be there because it gives them the mental confidence that we will not fall over on that left side. And if it was blank, there could be this feeling that I have to keep myself straight and not lean left or right. So individuals develop their own throwing techniques, and thus I think the bar there, as you often have mentioned, for safety reasons. And I'm extremely impressed, especially by the female athletes here who are married, have kids, responsibility of the household, responsibility of raising a family, and at the same time having that grit to prepare for such a big event, and then coming out. I think it takes a lot of courage and a lot of grit, and these are the real heroes, right? Absolutely. If you go through the history of India and other countries which have been very conservative, you'll see earlier part of sport dominated by the Milkha Singhs and the Tarlok Singhs and the Shivnath Singhs and the Sriram Singhs. But coming of Kamaljeet Kaur in the 1970 Asian Games, and then the Ushas and the Shiny Wilsons and the Deepa Maliks took over. का ये मुकाबला, जैवलिन थ्रो का ये मुकाबला, और मुकाबले में है आशाबेन पटेल गुजरात की, गौरीबेन पारसौत पटेल गुजरात की, हरियाणा की सुचित्रा प्रीदा, शताब्दी अवस्थी राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की हैं साक्षी कसाना और श्वेता शर्मा, गरिमा जोशी उत्तराखंड की. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की चुनौती को पेश कर चुकी हैं शताब्दी अवस्थी. चेहरे के हाव भाव कॉन्फिडेंस बता देता है कि क्या लेवल है खिलाड़ी का. I think as women athletes, we should all be very proud as a nation that we have such an extremely talented pool of women folk and young girls coming in from far-flung areas, from villages, small towns, states, getting represented at this level. There's a lot at stake for them. But that's what the whole world asked after the 2016 Olympics.
Only 2 medals for India, both women, PV Sindhu and Sakshi Malik. Where were the men gone? That's right. And I think if you do a comparison, players like Avni Lakhera, right? Not one, but multiple goals. And the latest inspiration, Sheetal Devi. बहुत सारे हुए हैं, वो जितने मैंने फोटो आपको खींच के भेजे हैं उसके बाद भी बहुत सारे हुए हैं। जी सर, जी सर। प्रवीण जी, प्रोड्यूसर है ना? जैसे मेरे सर के साथ। चल रहा है। कंटिन्यू कीजिए। और अब एथलीट को इस चेयर पर आना होता है। डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, नियम कायदे सब खिलाड़ियों के लिए बराबर। आप नेशनल लेवल से आए हों या स्टेट लेवल से आए हों, जोनल से आए हों या अंतर्राष्ट्रीय लेवल से आए हों, जी हाँ, जी हाँ, श्वेता शर्मा हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से 2 खिलाड़ी इस मुकाबले में हैं, साक्षी कसाना और श्वेता शर्मा। ये श्वेता शर्मा आपकी स्क्रीन पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। ट्राई कलर और इंडिया, ये इंडिया का टैग मिलना, it's a precious thing. That pride, it has no cost. You can't buy it, you get it. जी दीपक, देश को हम कई तरीके से योगदान करते हैं। जो सरहद पर सैनिक होते हैं वो अपने प्राणों का बलिदान तक कर देते हैं देश की आन बान शान के लिए। खिलाड़ी अलग तरीके से सर्व करते हैं, कलाकार अलग तरीके से करते हैं, किसान अलग तरीके से करते हैं, और इसी से बनता है एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्वेता शर्मा तैयार अपने पहले प्रयास के लिए। Shweta Sharma, struck by polio and wheelchair ridden. And that's why the government of India has been so focused on getting India rid of polio. And but nevertheless, a player like Shweta would not let their disability get in the way of their talent. And she's actually, on record said that she was inspired by para-athlete Deepa Malik, and then she mustered the courage to pick up sports as a career. So initially, no coaching, no background, no proper chair to practice, but still had the will, help of the friends, began watching YouTube videos, learned to throw. People stood up for her, and she gets training from a gym instructor, has 2 kids, and this is what I was talking about. These are the people who give you the courage to go on in life. जी हाँ, बिल्कुल। अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने ड्रीम्स को परस्यू करना, ये एक दोहरी चुनौती होती है, और दोनों ही चुनौतियों से देखिए कॉन्फिडेंस बताता है खिलाड़ी का, बॉडी लैंग्वेज बताती है कि कितनी टफ मेंटल कंडीशन है। 10.03 पहले प्रयास में, और दूसरा प्रयास
निश्चित तौर पर पहले से बेहतर। And this javelin is not light. It's 600 grams. और आपने कहा पोलियो सरकार का इनिशिएटिव रहता है 2 बूंद जिंदगी की। अगर आप ले लेते हैं तो ऐसी जो स्थिति है उसको टाला जा सकता है। दूसरे प्रयास में 11.94 और तीसरे प्रयास में 10.97 मीटर, यानी कि दूसरा जो प्रयास है वो सबसे बेहतरीन अभी तक। छह अटेम्प्ट टोटल करने होंगे और जो बेस्ट होगा उसी से डिसाइड होगा मेडल का रंग। बहुत ही बढ़िया थ्रो। And javelin players in general, both people with disabilities and otherwise, I think they and Shweta Sharma has gone through that phase where she suffered a shoulder injury, spent a lot of money and time in getting back to the game. But a particular part of the body is used and sometimes overused time and again, because that's the body part which is going to get you your medal, right? So for javelin it's the shoulder. Javelin and pace bowling. That's why you have so many injuries. Bumrah out for a year and a half. Shami now suffering, not able to go to South Africa. Neeraj had that massive operation after which he was also wondering whether he would ever be able to throw, rectified by Jal Pardiwala in Mumbai. And so definitely yes, that's the most, the shoulder and the knee are the two joints which have no kind of support in the body. जी हाँ, ये देखिए रिप्ले में कितना बेहतरीन ये प्रयास था श्वेता का। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, ये फ्लैग अप और इसी के साथ ये 6 अटेम्प्ट कंप्लीट, बेहतर स्कोर। So Shweta Sharma, the last attempt was her best attempt, 12.19 meter. जी हाँ, 12.19 मीटर अपने अंतिम जो प्रयास है उसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा है। यहाँ पर अक्सर देखा जाता है दूसरे या तीसरे प्रयास में जो है जैवलिन थ्रो में वो बेस्ट रहता है खिलाड़ी का, क्योंकि उसके बाद वो थकना शुरू हो जाता है। लेकिन यह बताता है कि आप मेंटली और फिजिकली कितने फिट हैं कि अपने छठे अटेम्प्ट तक अपनी जो एनर्जी है उसको बरकरार रख पाते हैं, उस पेस को बरकरार रख पाते हैं। संघर्ष की अनूठी कहानी दीपक ने सुनाई है अभी श्वेता की। निश्चित तौर पर बच्चों की माँ होना, एक हाउस की जिम्मेदारी संभालना और उसके बाद यहाँ नेशनल लेवल पर परफॉर्म करना, हैट्स ऑफ। Absolutely. And in fact, from a coaching point of view, I was watching the first 3 throws. She threw in 10 meters and then got into 11 and finished with 12.19. As a coach, I would have told her she should have done her first 3 throws on the training ground while warming up and then come. And I'm sure she could have done 13 meters from the way that she performed. And only a coach can give that advice. When you look at this performance minutely from the lens of a coach, that's when you can give these kind of recommendations. But absolutely right.